of the final action taken statement on the 32nd, 33rd, 34th, 35th, 41st, 42nd, 43rd, 44th and 45th action taken reports, Hindi and English version of the Standing Committee on Coal, Mines and as listed against my name in today's list of business. Reports of the department-related Parliamentary Standing Committee on Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Srimati Ranjit Ranjan. धन्यवाद अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के समक्ष यथा सूचीबद्ध उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के 5वें और 6ठे प्रतिवेदनों की एक प्रति अंग्रेजी और हिंदी संस्करण सभा पटल पर रखती हूँ। Reports of the department-related Parliamentary Standing Committee on Labour, Textiles and Skill Development, श्री नरेश बंसल। माननीय सभापति जी, मैं आपकी अनुमति से श्रम, वस्त्र, कौशल विकास संबंधी संसदीय स्थायी समिति के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अनुदान मांगे 24-25 के संबंध में पहला प्रतिवेदन, वस्त्र मंत्रालय की अनुदान मांगे 24-25 के संबंध में दूसरा प्रतिवेदन और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की अनुदान मांगे 24-25 के संबंध में तीसरा प्रतिवेदन हिंदी और अंग्रेजी में एक प्रति सदन के पटल पर रखता हूँ। Honorable members, I have to inform members that a communication has been received from Sri Shibu Soren, member stating that he is unable to attend the sittings of the current 266th session of Rajya Sabha from 25th November to 20th December 2024 due to medical ground. Does he have the permission of the House for remaining absent from 25th November to 20th December 2024 during the current 266th session of the Rajya Sabha? Permission to remain absent is granted. We wish him well, speedy recovery. Honorable members, I have received 2 notices under Rule 267. As the House had already decided that these 2 days will be devoted for discussion on Constitution, I appeal to the members not to press them. Thank you. Honorable members, today we commence a 2-day commemoration of a defining moment in our nation's history, the 75th anniversary of our Constitution's adoption on November 26, 1949. This milestone invites us not to just celebrate, but to deeply reflect on our journey and chart our path forward. This Constitution has been the bedrock of the world's largest democracy, testament to the profound wisdom of its architects and the resilience of our democratic spirit. Let our deliberations in this House over the next 2 days reflect the gravity of this occasion. May our discussions strengthen the bond between our parliamentary institutions that seek to serve 1.4 billion people, fructifying their expectations and aspirations. As we look ahead to 2047, when India marks centenary of its independence, let our debates illuminate the path forward towards our vision of Viksit Bharat. Now, Srimati Nirmala Sitharaman to raise the discussion on the glorious journey of 75 years of the Constitution of India. Thank you, Honorable Chairman, sir. Honorable Minister, honorable members, time will not be a constraint. In the Lok Sabha, the debate was fructifying in terms of time as well. I will accommodate as many as speakers who may be keen to contribute. And towards that, we will be increasing the time. I will report that at 2 p.m. today. Thank you. Nirmala Sitharaman. Thank you very much, sir. So let me first start by thanking the Honorable Prime Minister
the Leader of the House, Shri Jagat Prakash Nadda, my party, and you, the Honorable Chairman, for giving me this opportunity to speak in this discussion, marking the historic occasion of 75 years of our Constitution. I feel very honored, and equally, I feel humbled that this opportunity has been given to me. I thank the entire House and seek your indulgence if I come up with some thoughts which I'd like to share, which any member could have a difference of opinion. But I start again by paying homage to all the 389 members of the Constituent Assembly. In particular, the 15 women who, in less than 3 years together, took up the arduous challenge and prepared in a very challenging environment the Constitution for India, and which has stood the test of time. Until today, we are extremely proud of the way India's democracy is growing. As we mark the 75th year of our Constitution, sir, it is time, I would think, to reaffirm our commitment to build India, that is Bharat, that shall uphold the spirit enshrined in this sacred document. So with those words, I get into telling about the journey that these 75 years have seen of our Indian Constitution, and also to say why India's Constitution and India today stands out in a very separate league of its own. Sir, let me just remind, and I'm sure very many members of this House will know, that post-Second World War, nearly 50 countries, in fact over 50 countries, had become independent, and they had their constitution written, but many have changed their constitutions, not just amended them, but literally changed the entire feature of their constitution. But our constitution has stood the test of time, of course yielded itself to very many amendments, and here therefore I would like to have a few words of what Constitution India expert Dr. Subhash Kashyap had to say. While many constitutions of nations framed after the Second World War have floundered and gone into oblivion, our Constitution successfully faced many crises and survived. This itself is evidence of its resilience, dynamism, and growth potential. Now, India's experience has shown that our Constitution remains robust, yielding to several amendments, as I said, which were the need of the hour. And Dr. B.R. Ambedkar, the chairman of the drafting committee, had said, and I quote, "I feel, however good a constitution may be, however good a constitution may be, it is sure to turn out bad because those who are called to work it happen to be a bad lot. However bad a constitution may be, it may turn out to be good if those who are called to work it happen to be a good lot." Unquote. These are words of Dr. B.R. Ambedkar, sir. And in this background, therefore, with those words right afresh in our mind, I'd like to discuss about how in the last 7 decades, the living document that our Constitution is has faced very many amendments. And while looking at those amendments, I'd like to have a touchstone of 4 different elements. One
has the social intent behind any amendment been genuine? And therefore the outcome has been genuine? That's one test I would like to place any amendment on the testing board. Second, I'd like to see if the economic intent and the economic outcome of any constitutional amendment has actually been bona fide and has the outcome helped the society at large. Third, I'd like to test it on the ground of process adopted for it, for the amendment itself. And fourth, the constitutional spirit behind such an amendment. Now, if an amendment can go through these kind of tests, we'll be able to see why India's constitution, going by the words of Dr. Ambedkar, if you had good people who are called to work on it, give good outcomes. If you have, I'm using Ambedkar's words, sir, bad people who are brought to work on it happen to give such outcomes which are discussed. So if I move to talking about those amendments which have gone through these four tests, we'll be able to see how the intent and the outcome are justifiable, and people in the history books do write about them. Sequentially, because it is the first ever amendment, I'd like to take about the first Constitutional Amendment Act of 1951. So it's been said, and Honorable Prime Minister, while talking in the Lok Sabha, also referred to the fact that there was an interim government in place between 1947, August 15th. The interim government was there before that as well. And it lasted till 17th April 1952, post which an elected government took over the charge. But during 1951, when the amendment for the first Constitutional Amendment Act was passed, it was an interim government and not elected government of India post 1947. Now, this was enacted, therefore, within a year of the commencement of the Constitution. It's worth remembering. In fact, on the issues related to the amendment, or which triggered the amendment itself, which is the freedom of speech and expression, the amendment added 3 more heads to Article 19(2), saying public order could be a cause to restrict freedom of speech, friendly relations with foreign states could be a cause to restrict freedom of speech, or incitement to an offense could also be a cause. These were the amendments brought in the first Constitutional Amendment. So the Supreme Court of India, even in 1950, 1 year before this amendment, had passed 2 landmark judgments that paved the way for freedom of press under Article 19(1)(a). The Supreme Court had ruled in favor of the communist magazine Crossroads and the RSS's organizational magazine Organizer. The Supreme Court had ruled in favor of them in 1950. Many high courts also upheld the freedom of expression of our citizens and ruled in their favor. But in response, the interim government thought that there was a need for a first constitutional amendment, and that was brought in by the INC, and it was essentially to curb the freedom. So India, a democratic country, which prides itself even today about freedom of expression, saw the first interim government coming up with a constitutional amendment which was to curb the freedom of speech of Indians. And that is within 1 year of adoption of the Constitution. So, let me say, sir, that is because the first Prime Minister of this country deplored press scrutiny of his government, even as he publicly praised freedom of the press. There was no doubt about it. And he had scrutinized the amending bill himself before approving its introduction in the Parliament. In the Parliament, sir, it didn't go through smoothly at all. The voices which spoke about it,
And I will also refer some of the observations made by eminent members, vehemently who opposed it. Sri Shyama Prasad Mukherjee said, you can pass a law, I'm quoting, sir, you can pass a law and say that the entire task of framing, interpreting, and working the Constitution will be left in the hands of Pandit Jawaharlal Nehru, assisted by such people whom he may desire to consult. I would think it was a snide remark, saying, oh, you do it all yourself with the people who you choose to have, and not with the approval of the Parliament. That was the extent to which Pandit Shyama Prasad Mukherjee was upset about this amendment. Sir, he also said, you're treating this Constitution as a scrap of paper. You have declared preamble of your Constitution that you have done something unheard of in history, that within so short a period of attainment of freedom, you have trusted the people of this country to draft a Constitution. You have given a charter of rights to them. Now, Dr. Shyama Prasad Mukherjee says, now you come forward and stab them in the back. You're not working for the benefit of the present generation, but for party ends. But for party ends, unquote. Sir Sri Kameshwar Singh, a member of the Constituent Assembly, also had a lot of comments to pass, and he said, I quote, this Parliament, again, is a provisional one, and it cannot be said to be reflecting the will of the people in the way the Constitution wants Parliament to reflect it. For a government or a Parliament of this kind, it is highly improper to make such fundamental changes in the Constitution without making any reference to public opinion, and that too at the fag end of the strenuous parliamentary session and almost on the eve of a general election, unquote. So scathing remarks were made, and despite these remarks, Prime Minister Nehru went ahead with the amendment. Kameshwar Singh again goes about to say, do they not show, I quote, do they not show utter disregard for the Constitution when they attempt to amend it simply because some of the laws have been criticized and found invalid by the judiciary? Today we hear comments from the Indian National Congress about how the current government is questioning the judiciary. This comment coming from a member of the Constituent Assembly itself says, prior to the First Amendment to the Constitution, which curtailed freedom of expression. The Prime Minister, he furthers, the Prime Minister, I'm constrained to say, that is Sri Kameshwar Singh, the Prime Minister, I'm constrained to say, is creating a bad precedent by sowing the seed of executive despotism, and playing with the supremacy of the Constitution for party advantages, unquote. So there was no doubt this amendment was more raised for the sake of the party or the Prime Minister and the government's image, rather than assuring what the Constituent Assembly had suggested as the Constitution, which was going to be adopted. An amendment bill was passed, the Press Objectionable Matter Act, on 23rd October 1951. We know, therefore, the amendment, the intent, the four tests that I was talking about: social impact and intent, economic impact and intent, the constitutional spirit, and the process adopted for the amendment, all of which are questionable, but nevertheless that amendment was undertaken, and we heard how that amendment till today affects the freedom of speech of this country. Now, it is not as if this 1951 amendment happened all in a sudden. Prior to the amendment and post the amendment, we've had recorded action taken by those government that day, that particular government, in curtailing the freedom of speech. So the act was just waiting to happen, because even before it they started it, and even after that they were continuing. What are the examples, sir?
Majroor Sultanpuri and Balraj Sahani were both jailed in 1949 itself. For what mistakes, sir? During one of the meetings organized for the mill workers in 1949, Majroor Sultanpuri recited a poem that was written against Jawaharlal Nehru, and therefore he had to go to the jail. Sir, he refused to render an apology for the same and was jailed, therefore, in 1949, along with Balraj Sahni, eminent actor of those days. So that is the level of tolerance, and today we hold our constitution in our hand, go about it, and say freedom of speech. There is sense of fear in the country. Majroor Sultanpuri didn't feel it, Balraj Sahni didn't feel it, but the history repeats when it comes to the Congress party. Sir, Congress's record of curtailing freedom of speech didn't confine it with these two people. Nehru, a political biography which was written by Michael Edwards, in 1975 was banned. They banned also a film called Kissa Kursi Ka in 1975, which was directed by Amritlal Nahata, just because it questioned Prime Minister Indira Gandhi and her son, and also the Information Broadcasting Minister then. They banned also John Dalby's book, Himalayan Blunder, because it spoke about some huge crushing military disaster which happened in 1962, the China War. The details shouldn't come out, and therefore they banned that book as well. So this, and a bit later, 1988, Salman Rushdie's book, Satanic Verses, was also banned. So the spree of curtailing the freedom of expression, the spree of containing freedom of press has happened before 49, and during 49 and 50, 51 the act comes, and subsequently also it continues. So it's nothing new. So the amendment, again, a second issue that I'd like to draw your attention to. I said I'm putting it through 4 tests. A 9th schedule was brought into through the first Constitutional Amendment Act. The 9th schedule, sir, is an interesting innovation brought for bypassing judicial review. Why was it brought in? I'm questioning the intent, sir, the constitutional spirit which is not being respected, and the process which is adopted are part of the test I want every amendment to be put to, so that you know whether it is done with the national interest, or is it done with some economic public good, or if it is brought in because there is a social large good which is required to be obtained. No, the 9th schedule was brought in only because they wanted to bypass judicial scrutiny. Any act incorporated in the 9th schedule became fully protected against any challenge in any court of law under any fundamental right. So even the act declared invalid, even worse, today about everything retrospective we talk, saying no, nothing can happen in retrospective, it has to be futuristic. So prospective is what? Whether it is taxation, whether it is benefits, whether it is any clarificatory note. But here we go. The act declared invalid by a court becomes valid retrospectively after being incorporated into the 9th schedule. That's the extent to which they went, so that they can bypass judicial scrutiny. And Congress speaks about protecting rights and also on judicial independence, sir. It is shocking. Yes, we'll. Yeah, we'll come. I'll come. Please, sir. Jairamji, take your place. The third point, sir. Please. अच्छी डिबेट चल रही है, सुनिए, आपका जब समय आएगा बोलिएगा, प्लीज. SC, ST, OBC, come on. People who sat over Kelkar. Sir, the next instance which I would like to put through is amendment being enacted to, again, the judiciary was held in contempt. They had to be committed judiciary, or else they were not respected at all. Another example, sir. Constitutional amendment was brought in to nullify a judgment that arose in the case of Mrs. Indira Gandhi versus Raj Narayan.
wherein the order of the Allahabad High Court setting aside the election of Indira Gandhi was challenged. So, during the pendency of this case in the Supreme Court, the Congress party enacted the 39th Constitutional Amendment Act in 1975. Again, earlier there is a Supreme Court and many other high courts have given clearance, but even then we'll curb freedom of speech, 1951, the First Amendment. Here, a case is pending. Mrs. Indira Gandhi's case is being heard in the court, Allahabad High Court. But no, we are in a hurry. What if the court comes against me? So I come up with an amendment, 39th Constitutional Amendment Act, 1975. Again, valid retrospectively, which added Article 392A to the Constitution. What did it say? It said elections to the President, Vice President, Prime Minister and Lok Sabha Speaker cannot be challenged in any court in the country, and it can be done only before a parliamentary committee. Imagine the extent to which for a person to save her chair, इसीलिए किस्सा कुर्सी का was banned. कुर्सी बचाने के लिए कोर्ट का वर्डिक्ट आने से पहले ही हम जा करके अमेंडमेंट करेंगे पार्लियामेंट में. यही है इनके इतने दूर तक जाने वाले विषय, कानून को दुरुपयोग करना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करवाना देश के हित में नहीं है, प्रोसेस सही नहीं होता, इससे आर्थिक सुधार कुछ होने वाले नहीं है या सामाजिक सुधार भी कुछ होने वाले नहीं है. व्यक्तिगत और परिवारवाद के लिए ही अमेंडमेंट हुआ है. सर, मैं दूसरी और एक उदाहरण देना चाहती हूं. एक और उदाहरण देना चाहती हूं जिससे सामाजिक सुधार के लिए अगर कोर्ट से एक ऑर्डर आता है, उसको भी क्योंकि हमारे राजनीति के लिए वो उचित नहीं है, इसीलिए सामाजिक न्याय दिलाने वाले कोर्ट के आदेश के खिलाफ आकर के अमेंडमेंट कानून को करते हो हाउस में. इससे बढ़िया उदाहरण नहीं मिलेगा सर शाहबानू बेगम केस में, जहां सुप्रीम कोर्ट ने उस महिला को न्याय दिलाने के लिए, एलिमनी देने के लिए, डाइवर्स के बाद जो पैसा मिलना चाहिए वो दिलाने के लिए कोर्ट से जो आदेश आए, द कांग्रेस पार्टी पास्ड द मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवर्स Act 1986, which denied, it's very important, it denied Muslim women their right to alimony. सामाजिक न्याय, महिला के लिए न्याय मिलना नहीं चाहिए, चाहे वो कोर्ट में से आता है या कुछ और जगह से आता है, हम कानून से उनको नकार देंगे. महिला सम्मान नारी शक्ति बंधन अधिनियम ले आने वाले हमारे पार्टी इधर है. इस सदन में पहला कानून जो पास हुआ वो रिजर्वेशन फॉर विमेन सर, whereas the small benefit a widowed woman would have, a divorced Muslim woman would have got, was also defeated by this act. The constitutional amendment which the Congress party brought in 1986. So my test again, sir, neither samajik nyay, nor arthik nyay, nor the process, nor the constitutional spirit, nothing of this was respected. And each time the Congress brazenly, only to help the family, the dynasty, kept amending the constitution, and this is how far they went, even if it affects any particular women who desperately needed the benefit. Sir, I'll come again to one more, the emergency, where that one important touchstone, the process, was completely violated. On 18th December 1976, the then president gave his assent to the Constitution 42nd Amendment Act. During the emergency, when the term of the Lok Sabha was extended without proper justification, they invoked the law to say Parliament has to be in section
session for 5 years, but we needed to have 1 extra year, so the act was extended. The Lok Sabha term was extended. And in that extended term, when the entire opposition was put to jail, there was nobody there. And entire opposition was in the jail. Then comes constitutional amendment, sir. The process, the touchstone that we need to have, is the process valid? That was a total invalidated process, and therefore I would think this is a blatant abuse which the country majorly agreed on. Sir, only 5 members opposed the bill in the Lok Sabha. There was none in the opposition in the Rajya Sabha to oppose it. Imagine, constitutional amendment being passed, entire opposition in the jail. In the Lok Sabha, only 5 people are there to oppose it, even some coming from their own party. And in the Rajya Sabha, no opposition. But constitutional amendment, changing the preamble itself happens. The alteration of the preamble to include socialist and secular highlights the disrespect and disregard the Congress has for constitutional processes, principles, and institutions. Sir, the amendments were not about strengthening democracy, sir, but protecting those in power. Again, the process is used for strengthening the family. Sir, Baba Saheb Ambedkar had argued, and I quote, talking about whether the word secularism, talking about whether the word socialism should be included in the Constitution. Baba Saheb Ambedkar argued, I quote, I do not see, therefore, why the Constitution should tie down the people to live in a particular form and not leave it to the people themselves to decide it for themselves, unquote. And therefore, in the original Constitution, the word socialism was not there, as much as the word secularism. So 21 MPs, all opposition, belonging to all opposition parties, were held in jail. Manya Advani ji, Manya Atal ji were all in jail under Preventive Detention Law, Maintenance of Internal Security Act 1971, the infamous MISA. And I know of political leaders who have chosen to have their children named after MISA to remember those black days. And now they wouldn't even mind having alliance with them. Sir, all these together turned the Constitution into a qualitatively different text from what it was originally as adopted in November 26. So I'd just like to come here for one observation. Opposition member, respected Jairam Rameshji, refers to the work of Granville Austin with a left-handed compliment saying, we read it, but does anyone in the ruling party read it? Sir, and he says, masterly book. Yes, masterly book. He tells the full story of the amendment carried out till 1980. So I'm starting from 51, and I'm also going on that journey, talking about amendments, their purpose, their intent, their process. Now, since Jairam Ramesh has mentioned it, and there is some Granville Austin's line that I like to quote back to him. Sir, emergency, 42nd Amendment Act, the landmark Keshwananda Bharati case of 1973, the basic structure, doctrine, whole lot of things. In the words of that masterly Granville Austin, I quote, sir, the important constitutional development of the emergency, other than its very imposition, was the enactment of the 42nd Amendment. Austin says this. And he further says, coming in November 1976, the amendment demonstrates the progression of the Prime Minister
referring to Mrs. Indira Gandhi. I really quote again. Coming in November 76, the amendment demonstrates the progression of the Prime Minister and her government from having near absolute power without a coherent program, other than the protection of her prime ministry to power expressed through fundamental constitutional change. So, unquote. Exactly the point that I'm putting forth about emergency, the way in which 42nd Amendment passed through, how opposition leaders were all in the jail, not one person to oppose in the Rajya Sabha, in the Lok Sabha, just 5 of them speaking against it. When Granville Austin has said this, poor Jairam Ramesh did not mind quoting something else from Austin, but ignored this. Point proves. So the selective. प्लीज आप बैठ जाएं। माननीय शक्ति सिंह जी आप जगह लें प्लीज। माननीय जयराम रमेश जी। I have Granville Austin in my hands right now, and the same Granville Austin writes that the 44th Amendment was passed by the Lok Sabha and the Rajya Sabha to override the 42nd Amendment, large parts of the 42nd Amendment. And who voted on the 7th of December 1978 to repeal parts of the 42nd Amendment? It was Indira Gandhi herself. So Indira Gandhi in 1978 voted to repeal the parts of the 42nd Amendment which she realized had resulted in her electoral loss. So it's not, don't read selectively. Thank you, Jairam Ramesh. Please. Now, Honorable Minister. Thank you, sir. Please. Thank you, sir. You have responded. You have responded. Please. 1970. Please. Honorable Jairam Ramesh, please be brief. माननीय जयराम रमेश जी प्लीज बी ब्रीफ। सर, मैं आदरणीय रमेश जी का ज्ञानवर्धन करना चाहता हूं कि 1978 में मोरारजी देसाई वाज द प्राइम मिनिस्टर। जनता पार्टी की सरकार थी और जनता पार्टी की सरकार ने 42nd अमेंडमेंट को 44th अमेंडमेंट से हटाने का काम किया और आपको जनता ने हरा दिया था। श्रीमती इंदिरा गांधी was no more the prime minister, and when she was the prime minister, तब उन्होंने हर तरीके से प्रजातंत्र को रोकने का, गला घोटने का काम श्रीमती गांधी ने किया था। माननीय जयराम जी प्लीज। मुझे सुना नहीं, मुझे ठीक तरीके से उन्होंने सुना नहीं। मैंने कहा था 44th अमेंडमेंट आया 1978 में, मोरारजी भाई प्रधानमंत्री थे और 6 दिसंबर 1978 में लोकसभा में इंदिरा गांधी जी ने वोट किया 44th अमेंडमेंट के लिए। यही तो मैंने कहा था। ऑनरेबल मिनिस्टर प्लीज। माननीय मंत्री जी, सिर्फ माननीय मंत्री जी की बात रिकॉर्ड पे जाएगी प्लीज। Thank you very much, sir, and I fully accept Jairam Ramesh's observation. Obviously, Leader of the House was right in saying Morarji Desai was the Prime Minister, and during the voting, Srimati Indira Gandhi had said that, and she supported the changes in the changes to the 42nd Amendment. Very well. But the idea that I have right from the beginning said, yes, Der Aya Durustaya is what the Hindi language gives me, but the fact remains, and I'm glad that she changed her mind. It was such an improper thing to do during an extended tenure of the parliament, and an improper thing, even worse, to do, putting the opposition and then seeking a constitutional amendment. So at least in 78, after a massive defeat, which of course later she overturned and won the election and came, that's a process, that's an electoral process. That is the electoral process, and electoral process does teach lessons.
does teach lessons, and Srimati Indira Gandhi learned that lesson. I want to say this to the Congress party today. Srimati Indira Gandhi learned the lesson, and I'm happy Jairam Ramesh says that she stood up to support the amendment Morarji Desai and his government was bringing. But today's Congress, sir, I'll come to that. Sir, today's Congress is the matter that we need to talk about. But before that, sir, the eminent person who became speaker later on, Shri Mavlankarji, also said some things. These are words which we need to have a recall, because it's important for all of us sitting in this august house to know what the opinions were, and then take the next 75, next 200, next 500 years forward of this constitution. Mavlankar says, sir, and I quote, "This particular bill brings an almost qualitative change in our constitution structure. The tragedy of the situation is that by this amendment bill, the citizens, the courts of law, the states, the president, and indeed even this House of Parliament are all sought to be denigrated, and only the union executive is sought to be made to thrive, grab, and aggrandize." Unquote. So if that one amendment has brought in such thinking individual to say such harsh words, it needs retrospection. We should never repeat such, great follies, in which we took the Constitution for granted. People rejected such people, and lessons have to be learned. So, sir, I'd like to again say, when I soon would want to speak about what's the attitude of Congress today, I'd like to come to one line of an eminent person which was said during the 42nd Amendment debate. He was no less than later on Chief Minister, or prior to that also, and a minister. But as a Congress MP, Sri C.M. Stephen, an eminent congressman. Yes, it might be useful to remember that also. I'll read the quote. It might be useful further. Sir C.M. Stephen, as a Congress MP at that time, says, during the debate of 42nd Amendment, which had so many implications. So it brings me the shivers to read this line, but I'm reading it because we should know how we speak. Quote, sir, I quote, "Now, the power of this Parliament, through the 42nd Amendment that is declared to be out of bounds for any court." Shame. He says this. Now, the power of this Parliament is declared to be out of bounds for any court. It is left to the courts whether they should defy it. He continues, "I do not know whether they will have the temerity to do that. But if they do, that will be a bad day for the judiciary. The committee of the House is sitting with regard to the inquiry into the conduct of judges. We have got our methods, our machinery." Unquote. Sir, imagine if today one of our MPs would say, anywhere, would say this and say the temerity of the judges, the courts, but no, what we hear from Congress today, oh, you are undermining institutions, you have no respect to the Constitution, you that, you this. Look at this one statement, sir. And during emergency, passing the 42nd Amendment, the attitude of Gamand, the Gamandiya Gadbadhan, even today, but then they spoke that, passing the 42nd Amendment. The people of India didn't forgive this, and that's why they lost miserably. When she conceded to change the amendment, no? Sir, all right, don't beg for concessions like that. All right? Sir, what is today's INC, sir? In the budget session 2022, मैं ये घमंड बदला नहीं है, कम नहीं हुआ, उसको साबित करना चाहती हूँ.
Budget session 2022, sir. I'm not taking the name of the Congress leader who's not in this house, but I'm sure this statement will obviously ring a bell to everybody. The judiciary, I quote, the judiciary, the election commission, Pegasus, these are all instruments of destroying the voice of the Union of States, unquote. You heard CM Stephen then, and you just see the statements which are coming. Committed judiciary is what they wanted. The contempt for the judiciary and the constitutional bodies is not new now. And that term was used by one eminent congressman. And that eminent congressman, I'll take his name, sir, because I have to quote him, Shri Mohan Kumar Mangala. He had said that the government will appoint chief justices based on the government's assessment of their philosophy and outlook, telling the parliament in 1973, I quote, certainly, we as a government have a duty to take into consideration, I'm putting it in brackets. Certainly, we as a government have a duty to take the philosophy, the outlook of the judge in coming to the conclusion whether he should or should not lead the Supreme Court at this time. I repeat this quote, sir. Certainly, we as a government have a duty to take the philosophy and the outlook of the judge in coming to the conclusion whether he should or should not lead the Supreme Court at this time, unquote. After the judgment on Keshwanand Bharati case, sir, you're an eminent senior who became a senior advocate at a very young age, and I stand before you talking small things about judiciary. Pardon me if I have any, oversight which has not worked well. A day after the historic judgment in April 25, 1973, in the Keshwanand Bharati case, in which the majority declared that the parliament cannot alter or abridge the basic structure of the constitution, Srimati Indira Gandhi was furious with the judgment because it constricted the party's plan to bring in major amendments. So the three judges, this is what I want to highlight, committed judiciary. If they are not there, we'll do what we want. So the three judges were accorded swift punishment via suppression on April 26, and Justice A.N. Ray, who did not subscribe to the majority decision, was elevated. After Ray retired in 77, again, Srimati Indira Gandhi government gave supersession, superseded the senior most candidate, Justice Hansraj Khanna, to appoint Justice Mirza Hamidullah Beg as the Chief Justice. So it is really sad that the test that I'm putting each one of these amendments, whether they was in line with the constitutional spirit, whether it was the process was followed, whether the large economic good was considered, or social good was considered as an objective, none of them meet that. The OBC Commission is something which I want to in contrast mention. How our intent, Prime Minister Modi was clear. The OBC Commission will have to be set up, and constitutional amendments have to empower communities and not put them at a disadvantage. But therefore, the 102nd Constitutional Amendment Act was brought in 2018 and inserted Article 338B. But what's the contrast, sir, with the Congress? In 1950, Kaka Kalekar Commission was formed, but Congress prevented its report from being published. Dr. Ambedkar was of the view that Pandit Nehru was not concerned about the welfare, was not concerned enough about the welfare of the SCs. I quote Baba Saheb Ambedkar, "From the very first election, we have been fighting against the Congress because it is unnecessarily interfering with our rights." Just see the leader of the Congress party, Pandit Nehru. He has delivered 2,000 speeches during the last 20 years
but he has never spoken about the welfare of scheduled castes even once. This is Baba Saheb Ambedkar's words. So, from this, he further says, from this you can judge what sympathy the Congress party can have for our people when its leader is so much adamant. Unquote. Sir, this is said several times, but it's worth saying now. Congress did not even allow Baba Saheb's photo to be installed in the central hall of the old Parliament House for decades. He was, of course, denied Bharat Ratna. Similarly, the Mandal Commission was created to provide reservation for backward classes. But Mrs. Indira Gandhi or even Sri Rajiv Gandhi opposed it, delaying 27% reservation for the OBCs in central institutions. So we are the ones who brought it in, not the Congress. One more interest. One more instance of how the GST, which was again a constitutional amendment which has to be brought in. Sir, GST related constitutional provisions has never been encouraged prior to its bringing by Prime Minister Modi in 2017. Sir, this started very quickly to trace the timeline, sir. Sri Atal Bihari Vajpayee was the first to suggest during the NDA rule in 2000 to get going with the GST. However, the sincere efforts that he made could not realize or could not see the light of the day. And the 10 years after his tenure, led by the UPA, did not much do to get it on board. Sir, within 2 years after the introduction in the Parliament of the GST-related 101st Constitutional Amendment Act was passed and ratified by more than 50 states with effect from 8th September 2016. Just the data will tell you, sir, where the Congress party was. Despite being a coalition comprising of 26 parties, the UPA could not manage to get this GST. Even Congress-ruled states were opposed for the GST to be brought in. 2012. I'll say that as well. I'll say that as well. That will also be said. 3 BJP-ruled states. 3 BJP-ruled states also opposed. I don't hide facts. 3 BJP-ruled states also opposed, including Gujarat. I'm saying that. Sir, I'm saying it, sir. I'm saying it myself that Gujarat opposed it. I'm saying it myself. अरे नंबूत्री बात गवर्नमेंट को सेव नहीं कर पाया कांग्रेस से, आप क्या खड़े हो रहे हो? कम्युनिस्ट है, बैठ जाओ. Sir, 3 non-BJP ruled states, sir. So I don't. 3 non-BJP ruled states. I said about Gujarat, now I'm saying non-BJP ruled states, including Congress-ruled Maharashtra, opposed provisions of the UPA's GST. So if they want to first shout about Gujarat, I'm saying it myself. But please do shout about Maharashtra as well. No, they want to pretend they were all ready. They were not ready. Sir, Congress-led ruling UDF government, all right, in Kerala voiced severe concerns. Okay, sir, left front opposes, UDF opposes, Congress is part of the UDF, but no, they will never say that. One Gujarat is what they want to say. And I'll tell you why Gujarat had to oppose also. So, they could not bring the GST amendment. When we bring it, this is how they would like to shout about it. But I'm sorry. I'm not lying, sir. I'm sorry. I will have to demand a written apology from Shri Jairam Ramesh for accusing me of lying, which I never do.
And whether it is parliamentary or unparliamentary, first of all, sir, the chair, I trust you will take care of that. But accusing me of lying is now very clear, runs in the Congress blood. Somebody had to go to the court to say sorry. When I was the defense minister, not only did they call Prime Minister Modi as a chore, but they kept calling me that I'm lying. And who had to go and apologize in the court? And now I wouldn't mind seeing another member going and apologizing in the court, although the word said in the parliament is never taken to the court. Sir, all MPs in the House, when the GST was brought in, and this is also something which the Congress will have to gulp if they can, all MPs present in the House, including those of the Congress, had voted for the GST constitutional amendment, which was brought in by Prime Minister Modi. In fact, I wouldn't mind if Jairam Ramesh once again calls me that I'm lying, but records of the parliament will say it. Jairam Ramesh wanted to move some amendments, but Dr. Manmohan Singh personally asked him not to do so because of the fine consensus that has been arrived in the GST Council. Yes. Sir, I don't lie, records don't lie. Don't jump in a hurry to accuse me that I'm lying. Sir? I will authenticate it. But you authenticate that I'm lying, please. Honorable Minister. Honorable Minister, it's a fair comment by Jairam Ramesh. You need to authenticate it. Yes. And during the course of the day, when I watched the Lok Sabha debates, I frequently came across, please authenticate. It is started in this House. Honorable Minister. Thank you, sir. I will authenticate. And despite the support given by the Congress in passing the amendment, GST constitutional amendment, you have the Congress leader, again not taking name, goes about calling the GST a Gabbar Singh tax. Sir, and therefore, about amendments, I have said some words. Now I just want to highlight... Minister, but if some Gabbar Singh comes and files a suit then? Sir? If some Gabbar Singh in the country comes forward, that I have been defamed there. That's right, sir. And the problem, sir, when GST matters come, I will sometime again speak as much as I've done it earlier. Congress ministers are sitting and arguing about rates, sir, that they will not know. The GST Council, Congress finance ministers are also sitting and talking about it. So we are marking the Constitution 75th year. I want to just remind again something very, very quickly, sir. When 75 years of Indian independence was marked in 2022, Prime Minister Modi had celebrated it in the name of Azadi Ka Amrit Mahotsav. Throughout the country, every state government participated. Every state government also picked up all the freedom fighters, known, unknown, all of them were celebrated, and there was a lot of discussion all over the country. And recently, sir, Prime Minister also spoke about the 11 oaths that we need to take in the Lok Sabha when he spoke. And in 2022, from the Red Fort, he had announced how Panch Pran, meaning we need to get out of that Gulami Mansikta. We have to get over that and look forward to building this country and taking it forward and so on. But 75 years of Indian independence, Azadi Ka Amrit Mahotsav, 75 years of the Constitution, we are having these wonderful debates in the two houses. Every 25 or 50 years are celebrated, sir. I'd like to remind as to what was the celebration when in 25 years of Indian independence, what did we do? So I'm contrasting this. When the completion of the 25 years happened in 1973, sir, when in 1973, how was it celebrated, sir, 25 years of independence? There was a time capsule. A time capsule was interned, a Kal Patra was interned in the Red Fort.
And at that time, the people were told this time capsule will be seen only after 5,000 years. And in that time capsule, the journey of India, free India, was all being written, and actually it was kept as a top secret. Nobody knew anything as to what was inside the time capsule. A professor of history was employed to write this India since 1947, marking the 25th anniversary. But it was kept a secret. Sir, questions were asked in the parliament. What exactly is in the time capsule marking 25 years of India's independence? What actually went into that interned? It was a steel and copper made vacuum-filled case into which the document was interned, and then it was put into the Red Fort. That one, sir, was kept a secret. When asked in the parliament, the then education minister apparently said, and I'm reading from the book published by an eminent parliamentarian, RAJYA SABHA. He puts in his book as to what was the reply given by the education minister then. And I quote, before that, the education minister expressed his inability to disclose the said document. What's the document which is in it? No, I can't disclose. And what did he say? I quote, within the limitations of its compass, it was designed to preserve an authentic record of our time for posterity. Having regard to this concept, the question of contemporaneous publications or laying the text of the document on the table of the House does not arise, unquote. The education minister, while he put the time capsule to be preserved for 5,000 years, does not allow the parliament to know what was inside it. That is 1973, 2 years before the emergency was brought. This kind of an operation in stealth happened, marking 25 years of India's independence, and the parliament should not be informed. That was the line the education minister gives. Even worse, sir, I just want to highlight what was said about Sri Atal Bihari Vajpayee in that capsule content. I'd like to say, and I quote from the book, sir, the BJP of Atal Bihari Vajpayee is described as, says the author, and I quote, Jan Sangh People's Party is a militant orthodox Hindu party opposing the concept of secular state, unquote. This is what is being said about Atal Bihari Vajpayee in the capsule, about which they don't say in the House. They didn't say it in the House. Even worse, sir, if that is the record for first 25 years of independent India, which has to be preserved for 5,000 years, look at what has been said. C. Rajagopalachari, there was no reference. There was no reference to C. Rajagopalachari, the first Governor General of this country. To the President of India, Dr. Rajendra Prasad had no mention in that content. Dr. Radhakrishnan, Zakir Hussain, and to the Prime Minister Lal Bahadur Shastri, who though short in physical stature, was tall in political stature, who went all the way to Tashkent as a pilgrim of peace to establish harmony in this part of the world. Don't you think this author, who's a parliamentarian, asks, don't you think that such names deserve to be inscribed in the historical document of our country during the period of the first quarter century of Indian independence, unquote. So that's the level of secrecy about even members of parliament, about eminent leaders of different political parties, and sly comments were all packed up in that. Later, it was all removed. So that is the nature of Congress party, sir.
I want to highlight that fact. Sir, the names missed out is something which shocks the country, but that was the level to which the party went in the arrogance with which they were trying to rule. So the Constitution and the misuse is what I'm talking about here. Sir, one more thing, again, on the economic impact of such amendments which they bring in. It's a test for every one of us, whether it is one amendment today or another amendment tomorrow. Does it have an economic intent for the larger economic good, social intent, process, constitutional spirit? Let's see. Let's test each one of our acts, the amendments that we bring in, and then decide whether what we are doing is right. Sir, the Soviet model, which the Congress party copied under Prime Minister Nehru, continued with Indira Gandhi, was a model which did not do any good to this country, sir. See Rajagopalachari, the socialism, that socialism was refashioned as Mahal Nobis model. The central command and control structure, the license, quota, Raj, were all part of this. And in that, C. Rajagopalachari writes, sir, to the Prime Minister. He says, in an open letter, he says, Nehru came to Madras on Tuesday with all the paraphernalia of Prime Minister of India and attempted to, in a speech, talk about Rajagopalachari and his principles. But here, in Swarajya magazine, he publishes it in 1962, February 17, and I quote from that article. I want an India clear of the atmosphere of fear in which it is now enveloped, 62, where honest men engaged in difficult tasks of production or trade can carry on their occupation without fear of ruin at the hands of officials, ministers, and party bosses. He says that, I want an India where talent and energy can find scope for play without having to cringe and obtain special individual permission from officials and ministers, and where their efforts will be judged by the open market of India. And so on. He goes on, sir. I want the corruption of this permit license Raj to go. He says that. So a member who was part of the Congress party himself writes to Pandit Nehru saying this cannot go on, your socialism is ruining this country, the license permit Raj could not continue because you are leading to corruption. Sir, periodically Congress questions, hey, BJP, RSS, Jansan, what was your role during the freedom movement? We all know it and we've said it, but I want to ask the Congress, what is your role in the Arctic, India's economic freedom? What is India's economic growth? What is your effort in building economic strength of India? No wonder when we in 21 in our budget, if that is not true, sir, why in 1980 onwards the Congress party itself wants to dump license quota Raj, 91 they want to reform, and then take the claim for it saying we are the ones we reformed. You didn't have to reform if it was so good. It was damaging the Indian economy, and socialism was therefore brought into the Constitution's preamble through the 42nd Act, Amendment Act, only to prove that they are doing right thing. Although that was not needed at all, because the directive principle of state policy has enough and more. And that is where I want to bring this one particular important observation, sir. The Nehru Development Model, written by Arvind Panagaria. Latest book. This will tell you, sir, from an academic perspective also, how the socialism, the control Raj, the license quota Raj of the Congress's 50 years of rule ruined our economy. Though the country did come to terms with its mistake and changed course in 1991, by then it had lost 4 precious decades. Moreover, the history built over these decades continued to haunt
its development efforts even after the change of course. For one thing, the base income remained low. Given that the opportunity to grow rapidly had been missed in early decades. Therefore, even an acceleration in growth to 7 to 8% range on a sustained basis could not deliver genuine prosperity for another few decades. Moreover, 4 decades of patronage of socialist ideas and policies came to hardwire Indian politicians, bureaucrats, intellectuals, and even business people in ways that made a swift march to a market economy politically challenging. That's the reality of the policy of the Congress party, which they themselves came, we've reformed the country. They baggaged the country in 50 years, and later they wanted to claim that they are reforming and bringing prosperity to this country, which is not true. So therefore, sir, when Prime Minister Modi gives a call that first of all, sir, with all this socialism, 42nd Amendment to changing the preamble, the much promised Garibi Hatao has not delivered by them. If it's not been delivered by them, what did that socialism do to us? So when Prime Minister Modi says Vikasit Bharat 2047, we all should have to work together to make sure that that is done with all of our responsibilities intact, and such changes to the Constitution which they brought, which has only brought in decay for the Indian economy. I will not get into the details. Another paper from 2009, sir. Cato Institute Center for Global Liberty and Prosperity. Yeah, we are discussing the Constitution and the mistakes done by the Congress party, as a result of which the Indian economy is suffering, sir. Socialism kills. The human cost of delayed economic reform in India, sir. I'll authenticate this and give it to you to show how Congress party's attempts have only weakened the Indian economy. Sir, we changed that by clearly saying that the budget will now very clearly focus on the Indian economy, and as a result of which we will see a lot of economic growth. I'm not getting into the detail of the budget speech 2021, sir, paragraph 86. Those interested can see the thing. Sir, I'll come to this point about the Constituent Assembly, financial inclusion, economic justice. That is why I argued first, saying this declaration in the preamble, bringing socialism, was not warranted at all. There's enough and more said in the directive principle of states policy. Directive principle of state policy is adequate for us to do all the social, economic justice related activity. But no, the Congress party was doing it for their political agenda rather than for the larger good. Sir, I like to say, sir, Ambedkar, sir, Dr. Ambedkar says on 19th November 1948, our objective in framing the Constitution is really twofold. Ambedkar says, sir, to lay down the form of political democracy, to lay down that our ideal is economic democracy, and also to prescribe that every government, whatever is in power, shall strive to bring about economic democracy. And a very clear, the directive principle, Dr. Ambedkar says this, the directive principles have a great value, for they lay down that our ideal is economic democracy, unquote. And this is exactly what Prime Minister Modi is doing. 54 crore citizens who once had no means are now being given extraordinary connection to banking. The Jan Dhan Yojana, principles guiding our democracy, equity, justice, and opportunity. 50 crore Mudra loans, 50 crore Mudra loan accounts have created the pathway for micro entrepreneurs, street vendors, and so on. Sir, Article 38 of the directive principle says, the state shall strive to promote the welfare of the people
by securing and protecting social order, by ensuring socio-economic political justice, and by minimizing inequalities in income, status, facilities, and opportunities. Article 39 also says very similar about adequate means of livelihood and ownership control. Article 46 about scheduled caste and scheduled tribes. So I just want to highlight how, because of the specific actions taken by our government, you find 1969, I go back, sir, for a minute. Mrs. Indira Gandhi on the bank nationalization said, the political situation in our country demands, quote, that banking facilities should be extended in an increasing measure to backward areas, to agriculture, to small-scale industry, and so on. And perhaps banking operations should be informed by a larger social purpose, unquote. But in spite of introducing socialism into the preamble, they did not achieve any of what Mrs. Indira Gandhi justified for bringing nationalization of the banks. They paid only lip service, sir. By 2011, census data reveals that less than 60% of Indian households had access to banking service. Bank accounts, sir, zero balance accounts, were only 10.3 crores. By contrast, sir, 54 crore Jan Dhan accounts have been opened since 2014. 56% of the accounts belong to women. Similarly, pensions, insurance, and so on, sir. PM Mudra, 50 crore sanctioned accounts, 68% are women. Stand Up India, 1 crore SC/ST women borrowers, 30,000 crore has been distributed, 2.5 lakh people, of whom 76% of women are benefiting. PM Swanidhi, sir, 50,000 rupees loan is given to 67 lakh street vendors, of whom 45% are women, 42% are OBCs, and so on. Sir, we repeatedly in Lok Sabha and here spoke about how former Prime Minister said, if I send 1 rupee down, only 15 paisa reaches. By bringing in technology and using DBT, Prime Minister Modi made sure that accounts will receive, the beneficiaries will receive their money directly into their account. 1 rupee means 1 rupee will reach them. And this has helped save 3.48 lakh crores of taxpayers' money. These are very important to say that directive principle of state policy, which has even more things for all of us to do, can bring in poverty alleviation, but not the Nara Garibi Hatao, which delivered nothing on poverty. So lastly, I'll pay my respects to the women who were part of the constitution makers. As I said, 15 out of 385 members were women. I would think you will indulge me when I read the names of these 50 women. Ammu Swaminathan, Annie Mascarenhas, Dakshayani Velayudan, Begum Aizaz Razul, Durgabai Deshmukh, Hansa Jivraj Mehta, Kamla Chaudhary, Leela Roy, Malti Chaudhary, Purnima Banerjee, Rajkumari Amrit Kaur, Renuka Ray, Sarojini Naidu, Sucheta Kriplani, and Vijayalakshmi Pandit were the prominent women who were part of the Constituent Assembly, sir. The contribution of these women in the constitution making is immense. I know after that, Pandit Vijayalakshmi Pandit scaled heights in diplomacy. Rajkumari Amit Kaur became the first woman to be a Union Cabinet Minister. Durgabai Deshmukh was the founding member of the Planning Commission. Annie Mascarenhas and Renuka Ray served as ministers in their respective state governments. Sarojini Naidu and Sucheta Kriplani went on to become first female governor and chief minister, respectively. So I also appreciate the immense role played by the All India Women's Congress, who have done extremely good work, Women's Conference, All India Women's Conference. And these women were all celebrated during Azadi Ka Amrit Mahotsav, which we celebrated from 2022. The last observation I'd like to make, sir, it is very interesting that in this House, the first act that we passed is the reservation for women
which was the new act passed in the new parliament. I'd like to reiterate that Bharatiya Janata Party, my party, has always been committed for women and women's participation in politics. Even as early as 1994, in Vadodara National Convention, the BJP very clearly passed that seats must be reserved for women in both parliament and state assemblies. In 1994, sir. Then in 1998, BJP reiterated its commitment for women reservation by introducing it in the Lok Sabha. July 2003, BJP in its national executive in Raipur also passed a resolution to give reservation. 2007, BJP national executive approved 33% reservation for women. 2008 again, BJP amended its constitution so that its own office bearers will have 33% reservation for women, and I'm glad to say that I'm one of the beneficiaries of that reservation. And BJP has consistently supported women's reservation. In Rajya Sabha 2010, sir, I remember late Shri Arun Jaitley supported passionately to pass that, and in Rajya Sabha it was passed. But curiously, why that didn't go to the Lok Sabha, no one knows. And in the Lok Sabha, I think it was for reasons better known, but what was said in the public was some of the alliance partners were not favoring, and therefore the Indian National Congress did not have the courage to take it into the Lok Sabha at that time. BJP's Sankalp Patra of 2014 supported women's reservation. And again, Sankalp Patra before the 2019 election also very clearly supported. But I want to highlight the fact, sir, that in 84-89, Shri Rajiv Gandhi had 426 members in the Lok Sabha and 159 members in the Rajya Sabha. They did not have the conviction to pass the women's reservation bill at that time. Very clearly, they have been anti-women always. Shah Banu case is a very clear example. Sir, I would highlight the fact that although the credit is being taken for the Panchayat Reservation Act by Shri Rahul Gandhi and the dynasty, it was not him. It was P.V. Narasimha Rao who brought it and passed it on. But even then, it was only a lip service because no financial powers were given. Now, Honorable H.D. Deve Gowda ji, who former Prime Minister, is not here, but in 1996, there was during his time, the reservation bill was brought in. Nothing was supported by Congress at that time. Atal Bihari Vajpayee ji in 98, in 99, in 2002, 2003 brought it. No, the Congress wouldn't support. But the Congress's memory is very weak that they didn't support any of the bill all the time, whether it was Deve Gowda ji or whether it was Atal Bihari Vajpayee ji. And then in 2008, even Dr. Manmohan Singh faltered. They managed to pass it in Rajya Sabha, which I said a minute ago, but did not go to the Lok Sabha for fear of their alliance partners threatening to walk out of the alliance, and they didn't want to lose power, but they wanted to save their kursi only, and therefore did not do justice to the women. Whereas Prime Minister Modi and BJP, from the beginning, stood by women, made the first change in the party, and brought the reservation bill here. And therefore, if anybody is committed to the Constitution, it is BJP, Prime Minister Modi, and this government. And therefore, people who are walking with a book in their hand, Constitution, sometimes not knowing that inside there are Kora Kagas, nothing printed. They're not even opening it to see whether it is there. But they're walking around with this book, should know that they are the ones who repeatedly have failed the cause of the Constitution of India. Thank you very much, sir. Honorable members, to accommodate members willing to participate in the discussion and ensure sufficient time, if the House agrees, the lunch hour may be skipped today and tomorrow. And if required, I will take a call to increase the time further. Honorable Leader of the Opposition, Shri Mallikarjun Kharge. सर, आपने मुझे मौका दिया
इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। सर, आज 16 दिसंबर ये बांग्लादेश का लिबरेशन डे है, जो हमारी बहादुर नेता इंदिरा गांधी जी पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके और बांग्लादेश को लिबरेट करके और 1 लाख लोग, 1 लाख पाकिस्तानी सैनिकों को बंदी कराकर इस देश को बचाया और इस देश की शान पूरे दुनिया में चले गई और सारे लोग और 1 लाख लोगों को बंदी करना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन जिनको आयरन लेडी कहते हैं उसने ये बता दिया, अगर हमारे नज़दीक अगर कोई आए तो उनकी खैर नहीं, ये उन्होंने बता दिया। और आज वो दिन है बांग्लादेश लिबरेशन, और वहाँ पर जो गड़बड़ी चल रही है, कम से कम ये लोग आँख खोलकर वहाँ के माइनॉरिटी को बचाने की कोशिश तो करें। सर, मैं आपको और एक चीज़ बताना चाहता हूँ और यहाँ से शुरू करता हूँ, ताकि अब ये कॉन्स्टिट्यूशन हम नहीं पढ़े, अब उनको बताना पड़ता है कि हमको भी थोड़ा थोड़ा पढ़ना आता है। हम नहीं सर, हम तो म्यूनसिपालिटी स्कूल में पढ़े हैं, वो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं। निश्चित है कि उनकी अंग्रेजी भी अच्छी हो सकती है, उनकी हिंदी भी अच्छी हो सकती है और सभी कुछ अच्छा हो सकता है, लेकिन उनके करतूत क्या है, अच्छे नहीं। सर, मैं आपसे ये कि यहाँ है क्या तो रहेंगे, वो बाद में जवाब देंगे। सर, एक आपको शायरी सुनाना चाहता हूँ अहमद फराज की मत कत्ल करो आवाज है उसका नाम। तुम अपने अंकितों के नेज़े हर दिल में उतार जाते हो, हर दिल में उतारे जाते हो। हम लोग मोहब्बत वाले हैं, तुम खंजर क्यों लहराते हो। हम लोग मोहब्बत वाले हैं, तुम खंजर क्यों लहराते हो। इस शहर में नगमे बहने दो, बस्ती में हमें भी रहने दो। हम पालनहार है फूलों के, हम पालनहार है फूलों के, हम खुशबू के रखवाले हैं। तुम किसका लहू पीने आए, तुम किसका लहू पीने आए, हम प्यार सिखाने वाले हैं। इस शहर में फिर क्या देखोगे, इस शहर में फिर क्या देखोगे, जब हर यहाँ मर जाएगा, जब तेग पे लय कट जाएगी, जब शेर सफर कर जाएगा, जब कत्ल हुआ सूर साजों का, जब काल पड़ा आवाज़ों का, जब शहर खंडर बन जाएगा, जब शहर खंडर बन जाएगा, फिर किस पर संग उठाओगे, संग यानी पत्थर, फिर किस पर संग उठाओगे। अपने चेहरे आईनों में जब देखोगे डर जाओगे। तो मैं ये इसलिए कह रहा हूँ, आज की स्थिति, आज की परिस्थिति जो है, हमको बताना पड़ता है कि कैसा इस संविधान के तहत हुकूमत चलाने वाले लोग कोट कोट करके आगे का, पीछे का, बीच में का
सब बोलते रहते हैं। तो उन्होंने बहुत आपत्ति उठाई सोशलिज्म पे। मैं यहाँ से शुरू करूँगा कि ये जो है संविधान में जो प्रियम्बल में लिखा है और जिन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में लिखा है और इसको सर्वसम्मति से जो पास हुआ है उस पर भी आपत्ति जता रहे हैं। तो आप ही सोचिए ये कॉन्स्टिट्यूशन के फेवर में है क्या अगेंस्ट में है? मैं देखूं, अब उनको मालूम है। We the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure all citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity of integrity of the nation. सर, ये तो संविधान में नवंबर 26th day of November 1949 में ये हमने स्वीकार किया है। जब हमने ये स्वीकार किया है, इसके तहत हमको चलना चाहिए, हमको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। सिर्फ एक दूसरे के खामियां निकाल के अगर आप बोलते जाएंगे तो तुमने 5000 सालों में कैसी तकलीफ हम लोगों को दी है, मुझे भी ये बोलना पड़ता है। मैं लाया हूं, आपकी मंशा क्या थी? ये संविधान जो बने वो मनुस्मृति के तहत बने। मनुस्मृति के जो कानून होते हैं, हाँ, कानून होते हैं वो जो बनाए हैं, तो उसके तहत करना चाहिए था। ये जनसंघ की मंशा थी, ये आरएसएस की मंशा थी, ये आपकी मंशा थी। और आप सोशलिज्म की बात करते हो। अरे जो लोग इनइक्वालिटी पे फेथ है आपका, ये पढ़ो, ये आपका भी। मैं तो पढ़ के आपको लिखा हूं, इसमें नहीं पढ़े बोल के आप मैं समझना। जो हम ये पत्ते लगाया हूं वो एक एक अगर पेज पढ़ेंगे तो आपके रोंगटे उठ जाएंगे। अगर आपके पास कुछ खत, हाँ, अरे एड्रेस उनको अच्छा, उनको ये आपको देखना भी अच्छा नहीं लगता। चलो तो सर ये क्या लिखा है मैं आपको ये प्रेजेंट कीजिए। और ऐसे लोग जो लोग झंडे से नफरत करते हैं, जो लोग हमारे अशोक चक्र से नफरत करते हैं, जो लोग संविधान से नफरत करते हैं, और ये लोग आज हमको पाठ पढ़ा रहे हैं। ये क्या है? अरे आपने तो साहब ये संविधान जब बना, आपने जब ये संविधान बनी सर, उस वक्त संविधान को जलाने वाले लोग लालमय, ये जो रामलीला मैदान में बाबा साहब अंबेडकर और जवाहरलाल नेहरू जी का और महात्मा गांधी जी का पुतला वहां पर रख के इन्होंने जलाए उस दिन, जिस दिन इम्प्लीमेंट हुआ। और अरे चुप बैठो, हो ना, बैठो। हाँ, जलाए सो लोग हमको संविधान कैसा बचाया और क्या किया? नेहरू जी को गालियां, इंदिरा जी को गालियां, और कहां तक गांधी पूरी फैमिली को गालियां। शर्म आना चाहिए। पढ़ो, आप इतिहास पढ़ो। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के डिबेट पढ़ने के बाद, संविधान बनने के बाद आप लोगों ने
कैसी कैसी बातें संविधान के बारे में आपने बोला है, कहा है, आप तो देख लो, लेकिन ऐसे लोग टीका करते हैं। सर, और एक मैं आपको No, I'm not. No, I am not yielding. Should be authenticated. No. Honorable members, Authenticate. only when the speaker will yield, I can give an opportunity. If there are issues, you can have notice. And I'm sure the House will bear with me on this. And I have a mind to enrich myself. जो किताब आपने दिखाई है, मैं पढ़ूंगा। सर, बाद में। नहीं, अभी देता हूँ। मनुस्मृति की किताब, ये 3-4 मैं जला, वो उतना पढ़ दो और मेरे को वापस कर दो, क्योंकि आजकल मिलता नहीं। Honorable members, can I return a document put on the table? I can't. It has to be put on the table. अच्छा, मैं और एक खरीद के देता हूँ। Please continue. सर, आपको 7 दिसंबर 2022 का दिन याद दिलाना चाहता हूँ, जब पहली बार सभापति के रूप में इस सदन में पधारे थे। मैंने आपके स्वागत में कहा था कि आपको नियमों, मेंबर्स के अधिकारों और भावनाओं की जानकारी बहुत है। जैसे संसद 2 सदनों के मिलकर चलती है, उसी तरह लोकतंत्र सत्ता पक्ष और विपक्ष के 2 पहियों पर चलता है। सत्ता दल का अपना सरकारी एजेंडा होता है और हम लोगों के मुद्दों को यहाँ और उनके सवालों की चर्चा हम चाहते हैं। मैंने कहा था, हमारे संविधान निर्माताओं ने जिस मकसद से राज्यसभा का गठन किया, उसी भावना से ये सदन काम कर पा रहा है या नहीं, इस पर आप गौर कीजिए, इस पर आप बोलिए। और टीका करने से आपके पाप धो जाने वाले नहीं है। जो कोविड में मरे, जो हर जगह आज जो अट्रॉसिटीज हो रहे, शेड्यूल कास्ट पे हो रहे, शेड्यूल ट्राइब से हो रहे और महिलाओं पे हो रहे। यहाँ तक आप सुने होंगे सर, मध्य प्रदेश में एक शेड्यूल ट्राइब्स के बच्चे के मुंह में यूरिन कराया, मूत्र। इन समस्याओं को पहले सुलझाओ। लोगों को जो हमारे को जो बुद्धि दे रहे हैं ना, अपनी गवर्नेंस को सुधारो, वो छोड़कर आप मनमाने बोल रहे हैं। सर, आपका शुक्रिया भी हम अदा करते हैं, इसलिए कि संविधान के स्वीकार कर जाने के बाद 75 साल में आप जो चर्चा के लिए 2 दिन टाइम दिए और हमको टाइम भी अलॉटमेंट किए, लेकिन थोड़ा आधा घंटा 1 घंटा ज़्यादा भी हो तो हमारे लोग बोलने दो, क्योंकि जब तक आपने तो बोला है पहले ही, तो आपका धन्यवाद करता हूँ। तो इसीलिए, क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम लिया तो बाकी के लोगों को मिलता नहीं, इसीलिए मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ। और दूसरे चीज़ ये है कि सबसे पहले मैं उन महान नायकों को श्रद्धांजलि देता हूँ जिन्होंने एक समतावादी भारत का सपना देखा था। और सभापति जी, स्वाधीनता संग्राम के दौरान ही संविधान निर्माण की सोच उपजी थी। कांग्रेस के इतिहास से ये गहराई से जुड़ा है और 1931 में
सरदार पटेल की अध्यक्षता में कराची कांग्रेस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने मूल अधिकारों और आर्थिक नीति पर प्रस्ताव रखा था जो पारित हुआ। ये ऐसा ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना, ये मूवमेंट से बना, ये आजादी के लड़ाई से बना और उसी वक्त ये सोचते 1931 का, ये आज का नहीं है। और नेहरू जी ने संविधान सभा की मांग को 1937 के चुनाव का केंद्रीय मुद्दा बना दिया था। महात्मा गांधी जी ने 25 नवंबर 1939 को स्टेटमेंट दिया था। क्या दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मुझे अन्य बातों के अलावा संविधान सभा के गठबंधन से उत्पन्न प्रभावों का अध्ययन करने के लिए विवश किया है। मैं और एक बार पढ़ता हूँ। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मुझे अन्य बातों के अलावा संविधान सभा के गठन से उत्पन्न प्रभावों का अध्ययन करने के लिए विवश किया है, गांधी जी ने कहा था जब उन्होंने कांग्रेस के सभापति जी सर संकल्पों की पहली बार इसे पेश किया तो मैंने इस विश्वास के साथ अपनी संतुष्टि कर ली कि उन्हें लोकतंत्र की तकनीकी बारीकियों के बारे में बेहतर जानकारी है, परंतु मैं पूर्णतः संशय मुक्त नहीं था। तथापि वास्तविक तथ्यों में मेरे सभी संशयों को दूर कर दिया गया। ये महात्मा गांधी जी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में और उस वक्त किस ढंग से संविधान बनाना और इसका किस तरीके से काम होगा, ये महात्मा गांधी जी ने स्वीकार किया जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। तो उनके लिए सुबह शाम क्रिटिसाइज करते बैठते, अरे पीछे कितना काम हुआ इसके लिए, कितने लोग लड़े, कितने सलाहें दिए, ये सब छोड़ो। महात्मा गांधी बोले वो भी नहीं सुनेंगे, नेहरू जी बोले वो भी नहीं सुनेंगे, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बोले वो भी नहीं सुनेंगे, मौलाना आजाद बोले वो भी नहीं सुनेंगे। क्या सुनने वाले हैं? आप तोड़ मोड़ करके यहाँ लोगों को समझाने के लिए आए हो, क्या संविधान के ऊपर चर्चा करने के लिए आए? सर, संविधान की प्रस्तावना में मैं अभी पढ़ा, वो फिर पढ़ने की जरूरत नहीं। इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, ये सब मैंने अभी पढ़ा। इन चीजों की ही जरूरत है हमको समानता होना चाहिए, हमको स्वतंत्रता होना चाहिए, हमको बंधु प्रेम होना चाहिए और न्याय होना चाहिए। इसमें ये जो चंद शब्द हमारे संविधान में है और जिसको हमने सभी स्वीकार किया है, लेकिन इस पे भी आपत्ति हो रही है कि सोशलिज्म क्या, फलाना क्या है। यही है कि इकोनॉमिक्स पे बात करें, नेचुरली वो एक्सपर्ट्स हैं, इकोनॉमिक में ज़्यादा एक्सपर्ट्स है और ये जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, तो नेचुरली जवाहरलाल नेहरू जी के यूनिवर्सिटी से है और वो भी इकोनॉमिक्स में इनकी पढ़ाई हो गई है। नेचुरली वहाँ क्या पढ़े मुझे मालूम नहीं, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में सब जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इतने प्रोग्रेसिव है, देश बनाने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। चाहे इकोनॉमिक्स में हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस में हो, चाहे हिस्ट्री में हो, चाहे एंथ्रोपोलॉजी में हो, चाहे अपना हर सब्जेक्ट पे वहाँ पर बहुत ही उनको मान सम्मान दुनिया में मिलता है। और बहुत से
जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए हैं वो दुनिया में अपना नाम किए हैं और डेमोक्रेसी पे बहुत बड़ा विश्वास रखते हैं। लेकिन यहाँ अनडेमोक्रेटिक थिंग्स को जो खत्म करने की बात हो रही है, जो डेमोक्रेटिक थिंग्स है उसको खत्म करने की बात यहाँ हो रही, ये कैसा? अरे जो आइडियोलॉजी को आप एक बार स्वीकार करते हो ये बार बार कैसा बदलता है? आपने तो, अरे चुप बैठो भाई, अब बार बार आप कैसा बदलते हो? मैं एक ही पार्टी में हूँ कम से कम 1969 से आज तक कोई पार्टी नहीं, एक ही सिंबल है मेरा, एक गाय बछड़ा, अब क्या है हाथ। मैं किधर नहीं गए तो यहाँ घंटे को सर जरा इनको चुप रहने का भी बोलिए, क्योंकि मैं तो चुप बैठा था जब निर्मला सीतारामन जी बात कर रही थी। कुछ नहीं सर, पता नहीं कब ये हृदय परिवर्तन हुआ इनका, 224 के चुनावों के बाद हुआ क्या पहले ही हुआ था मुझे मालूम नहीं। आज जो कॉन्स्टिट्यूशन की अब जरा बात कर रहे हैं, अब अभी हुआ, कब हुआ मुझे मालूम नहीं, लेकिन कम से कम उनका हृदय परिवर्तन करने का काम इस देश की जनता ने 2024 के इलेक्शन में दिखाया। सर मैं और एक बात कहना चाहता हूँ, पूरा देश जानता है 1949 में आरएसएस नेताओं ने भारत के संविधान का विरोध किया था, क्योंकि ये मनुस्मृति पर आधारित संविधान नहीं था। इस बारे में आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर ने 30 नवंबर 1949 के अंक में विरोध करते हुए संपादकीय यानी एडिटोरियल में ये लिखा था, आप लोगों के मन में आज भी मनुस्मृति वो कायम है। मैं बार बार बोलता रहा, आप लोग उल्टा हमारे ऊपर ही इल्जाम आप लगाते रहे। सर सभापति जी, न तो इन्होंने संविधान को स्वीकार किया, न तिरंगे झंडे को माना, इसीलिए पहली बार 26 जनवरी 2002 को कोर्ट के आदेश पर आरएसएस हेडक्वार्टर पर तिरंगा मजबूरी में फहराना पड़ा। सर तिरंगे झंडे को माना, इसीलिए पहली बार 26 जनवरी 2002 को आरएसएस हेडक्वार्टर पर तिरंगा मजबूरी में फहराना पड़ा, क्योंकि कोर्ट का आदेश था। चलिए कम से कम संविधान के वर्किंग पर चर्चा के लिए तो मान लिया आपने कि अब हम सभी लोग तिरंगे के नीचे ही काम करेंगे। सभापति जी, हमारा संविधान भारत के हर व्यक्ति को शक्तिशाली बनाता है, गरीब और कमजोरों की आवाज है, सत्ता का नैतिक मार्गदर्शक है, जाति, पंथ, लिंग या आर्थिक आधार पर भेदभाव करने की इसमें गुंजाइश नहीं है। लेकिन संविधान पर खतरा बना हुआ है, आने वाली पीढ़ियों के लिए इसे सहेज कर रखने के लिए हमें लगातार चौकन्ना रहना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि इनकी मंशा कब बदलती, क्या होती मालूम नहीं है। इसीलिए क्योंकि जो लोग 70 साल पहले अपनी पार्टी जो स्थापना की थी और अपना इनका जो मेन सपोर्टर है आरएसएस, ये सब लोग इसके खिलाफ बोलते गए, लेकिन कम से कम उनको अब देश के यानी सुरक्षित रखने का, एक रखने का अब बुद्धि देश के लोगों ने दिया। इसलिए मैं
आपके तरफ से, आपके ओर से उनको भी धन्यवाद देता हूं, आपके बदलते हुए नीति को, और जो सम्मान कॉन्स्टिट्यूशन को दे रहे हैं, सम्मान झंडे को दे रहे हैं, सम्मान देश के लोगों को दे रहे हैं, और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जो बनाए हैं ये सारी चीजें, उनका भी याद आपको अब आ रहा है। इससे पहले उनको याद ही नहीं था, वो सब डूब गए थे। सर, मैं जब बहुत से शक्तिशाली देशों ने यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज नहीं था, महिलाओं को वोट का हक नहीं था, तब भारत में महिलाओं के समेत सभी को यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का अधिकार अगर किसने दिया, वो कांग्रेस ने दिया, संविधान ने दिया। और ये संविधान अडल्ट फ्रेंचाइज, सर आपको तो मालूम है कि कितने देशों के, आप भी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े होंगे, बहुत से महिलाओं को, या ऑस्ट्रेलिया हो, अमेरिका हो, यूके हो, फ्रांस, वहां पर डेमोक्रेसी की बहुत बातें करते थे, लेकिन डेमोक्रेसी के साथ, संविधान के साथ उनको वोटिंग का पावर नहीं मिला था। ये एक ही देश ऐसा है जिस दिन हमारे को ये मिला, आजादी मिली, संविधान इंप्लीमेंटेशन हुआ, उस दिन से अडल्ट फ्रेंचाइज सबको मिला। गरीब, अमीर, कम से कम काम करने वाले लोग, मजदूर, किसान, सबको मिला। और ये किसकी देन है साहब? ये नेहरू जी की नहीं है, ये अंबेडकर की नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का नहीं है। और वहां पर जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में इनके मेंबर थे, वो सब चिल्लाते रहते थे। मैं पूरा वो डॉक्यूमेंट्री देखा हूं, आप भी देखिए, 10 घंटे का डॉक्यूमेंट्री है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का। अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कौन कौन क्या क्या किस उस वक्त बोले हैं, किस क्लॉज पे किसने क्या बात रखी है, किस आर्टिकल पे कितने बहस हो गए। जरा देखे तो मालूम होता है जे कामत जी क्या बोले और फलाना साहब ने क्या बोला और जनसंघ के हमारे नेता क्या बोले, ये सब उसमें मालूम होता है। तो इसीलिए आप जरा वो देख लीजिए, उनको दिखाइए, तो बहुत बड़ा, वो भी राज्यसभा की देन है क्योंकि वो डॉक्यूमेंट उन्होंने ही बनाया। और उसके बाद वो भी देखिए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का डिस्कवरी ऑफ इंडिया, वो भी एक 40 घंटे का है। तो वो भी एक बार देखे तो आपको मालूम होता है दुनिया में पहले कैसी थी, हिंदुस्तान कैसा था, बाद में हम किस ढंग से इतने सिविलाइज्ड होकर काम कर रहे हैं, और क्या वो सामाजिक समानता थी, ये सारी चीजें उसमें आप देखेंगे। ऑर्गेनाइजर में 51-52 के चुनावों के दौरान यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के खिलाफ लिखा गया। ये तो सही है ना? अच्छा, पंडित नेहरू ये बोले साहब, उन्होंने कहा अडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में 51-52 को उन्होंने बोला, ये कहा, पंडित नेहरू वुड लीव टू कन्फेस द फेल्यूर ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज इन इंडिया। Shall I read? Pandit Nehru would leave to confess the failure of universal adult franchise in India. यानी यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज को, जो महिलाओं को वोटिंग मिलता था, जो शूद्रों को वोटिंग मिलता था, जो गरीब लोगों को मिलता था, इसके बारे में अपोज अगर कोई करे, वो आरएसएस के लोग करे, ये लोग जनसंघ के लोग करे, और आज हमको पाठ पढ़ाते हो। और मैं ये कहना चाहता हूं, और उन्होंने कहा कि ये सत्यानाश होने का खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू जी देखेंगे। अरे आप सब अडल्ट फ्रेंचाइज में ही वोट देकर आए हैं, दिए या नहीं? और आप ले रहे हैं वोट भी उसी के वजह से। तो मेरे को कहना ये है कि जो बातें आप, अच्छी बातें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की थी और गांधी जी की थी और दूसरे नेताओं,
वो सब छुपा छुपा के कट एंड पेस्ट जो अच्छा लगता है वो पढ़े। और यहाँ जो हमारे प्रधानमंत्री जी वहाँ लोकसभा में जो कहे थे, मैं उनका भी पूरा स्पीच देखा, लेकिन वो टिप्पणी यहाँ नहीं करना। और राजनाथ सिंह जी का वो भी देखने के बाद मुझे ऐसे महसूस हुआ कि वो जो भी कोट वहाँ कर रहे थे, सब कोट जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में बाबा साहब अम्बेडकर ने जो बोला था और दूसरे नेता वही कोट किए, इनकी दिल की बात बाहर नहीं आई। वो खुद इस संविधान को चाहते या नहीं चाहते, हमको क्रिटिसाइज करने के लिए, टीका करने के लिए कौन से पैराज, कौन से शब्द प्रयोग करना उतने उठा के वो बोलते गए। लेकिन आपने क्या किया वो बोला ही नहीं। आप देश के लिए क्या किया बोला नहीं। आप कितने बार जेल गए बोले नहीं। आप कितना पीड़ा देश के लिए आपने सहन किया एक कहा नहीं। अरे देश के लिए जो लोग लड़े नहीं, उनको आजादी का महत्व क्या मालूम है और संविधान का क्या मालूम है। जो पसीना बहाए, घर छोड़ के चले गए, विद्या अपूर्व करके रहे, और ऐसे लोग आज उनके बारे में, वो स्वर्गवासी होने के बाद आप उनकी बात करते हो। चुप बैठो तुम, अभी जाके तुम्हारे डिफेंस मिनिस्टर के पास सीख के आओ। सर, आज हमको इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। हमने क्या किया, क्या करना है, और जो वायदे हमने किए थे, हमको बोले वो प्राइम मिनिस्टर का स्पीच पढ़ा मैं, तो हमको सिखा रहे थे ये जुमले वाले हैं और ये झूठ बोलते हैं, ऐसा बोल के उन्होंने, अरे भाई झूठे नंबर 1 तो आप ही है। 15 लाख दे तो बोले सर अभी इंतजार कर रहा है, नहीं मिल रहा है। हाँ, और वो लोगों को 2 करोड़ रोजगार देने का बाद वो झूठ है सच है। और किसानों को एमएसपी डबल करने का सर मिला। आपका मतलब असत्य, असत्य, झूठी डिलीटेड। देखो साहब, ये असत्य है, घोर असत्य है, घोर असत्य है। तो ये चीजें पर झूठ नहीं है। हाँ, झूठ उसका भी आप जब बोले, देखो मैं अपनी गलती को स्वीकार करता हूँ, झूठ नहीं बोलना ये अनपार्लियामेंट्री आपने बताया और है भी, तो मैंने छोड़ दिया उसको। लेकिन इन्होंने बार बार बोले। अब सीताराम जी का भाषण आपने गौर से सुना, मेरे निर्मला सीताराम जी, सॉरी, तो उन्होंने ये कहा इट इज अ लाई, ये पार्लियामेंट्री है, अनट्रूथ, ट्रूथ ये शब्द यूज करना, लेकिन उनको अलाउ कर दिया, मेरे को ठोक दिया। सर, और एक बात वहां पर बोले कि खुद उन्होंने ऐसे स्लोगन दिए और सब वो जुमले, हमारे को वो जुमलों का इल्जाम हमारे ऊपर लगा रहे हैं। तो वो ये जुमले वाले लोग देश को भ्रमित कर रहे हैं और असत्य बातें बोलकर लोगों को धोखा दे रहे हैं। और फिर बात तो यहाँ पर आकर ऐसा बोल देते हैं कि वो क्या हमारे पास बोलते हैं कन्नड़ा में, झूठ 100 बार बोल के, नहीं सॉरी, असत्य 100 बार अगर बोलते गए तो उसको वो सत्य के इसमें
हो सकता है, वैसा ये गोबेल्स से भी ज़्यादा, गोबेल्स जो झूठ उन्होंने असत्य बातें करते थे उससे भी 100 गुना ये लोग करते हैं। और फिर ऊपर से लोगों को हमको कहते हैं इनने आपने क्या किया, इमरजेंसी में क्या किया, फलाने में क्या किया। नेहरू जी ने कितने बार बोलता हूँ, नेहरू जी ने कैसा किया, क्यों करना पड़ा पहला अमेंडमेंट और किस वजह से हुआ, वो बोलूँगा। सर, मोदी साहब का तो 1 घंटा 50 मिनट भाषण हो गया, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर का 1 घंटा 10 मिनट हो गया, तो 15-20 कई घंटों से बात करने की भी उनका पहले से प्रैक्टिस है, क्योंकि बजट और जब पेश करते हैं उस वक्त भी बोलते हैं, तो नेचुरली सर पीएम या तो अतीत में रहते हैं या कल्पना लोक में। ऐसा लगता है कि वर्तमान उनकी डिक्शनरी में नहीं है। बेहतर होता कि तो वो बता देते कि 11 साल में ऐसा कौन सा काम किया है जिससे हमारा लोकतंत्र और संविधान मजबूत हुआ। डिमोनेटाइजेशन हो, दूसरे हो, सब खत्म करने की बात ही करें, गरीबों को आर्थिक दृष्टि से कुचले। ऐसे लोग हमको पाठ पढ़ा रहे हैं कि आर्थिक मजबूती हमने की। अगर सोशलिज्म की बात करते उसको भी टीका आपने किया। मैडम, अगर सभापति जी, अगर सोशलिज्म ये जो है लैंड रिफॉर्म्स नहीं आता, बैंक नेशनलाइजेशन नहीं होता, फूड सिक्योरिटी एक्ट नहीं आता, नरेगा नहीं आता, तो आज गरीब मरते थे। और कोविड में आपको जो आश्रय मिला वो नरेगा से मिला, वो फूड सिक्योरिटी से मिला, और कंपलसरी एजुकेशन एक्ट के तहत जो बच्चों को आज पढ़ाई हो रही, ये है काम। ये नहीं बात में किस भाषा पे भी ठोको, भाषण करते हो, लेकिन उसका परिणाम क्या है? कुछ नहीं। और ये बात हमेशा वो करते हैं, तो जिससे हमारा लोकतंत्र और संविधान मजबूत हुआ है। और प्रधानमंत्री जी के एक बार फिर सदन और देश के गुमराह करने की कोशिश की और कहा ये जरा सुनिए साहब, 1947 से 1952 के बीच में कोई इलेक्टेड सरकार नहीं थी और वो गैर कानूनी संशोधन ला रहे थे, ये मोदी साहब का कहना है। तो मोदी साहब के लिए मैं उनकी याददाश्त के लिए रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि देश की आज़ादी में ना उन्होंने हिस्सा लिए ना मैं हिस्सा लिया। नेहरू जी लिए और महात्मा गांधी जी लिए, सरदार पटेल लिए, ये लोगों ने जो किया काम उस पर टिप्पणी करने का हमको कोई अधिकार नहीं। और दूसरा, उन्होंने नेहरू जी, पटेल जी, बाबा साहेब खुद अपने श्याम प्रसाद मुखर्जी की क्रेडिबिलिटी पर हमला हुआ। वो हमला बोले क्योंकि ऐसे लोगों के बात कर रहे थे जिनको उन्होंने कभी सुना नहीं, कभी देखा नहीं, उनके साथ कभी लड़े नहीं। तो नेहरू जी के खिलाफ नफरत में आप इतना बह गए कि आपने संविधान सभा, अंतरिम सरकार और अंतरिम संसद सब पर सवाल खड़ा कर दिया। और इसमें सभी में श्याम प्रसाद मुखर्जी भी थे। तो इसीलिए कम से कम आप बोलते वक्त जरा ये तो सोचना चाहिए, मैं क्या अपने नेता के खिलाफ बोल रहा हूँ, क्या नेहरू के खिलाफ बोल रहा हूँ, क्या किसी और के खिलाफ बोल। इतना सोच के तो अगर बोलते तो मैं समझता था
कि नेचुरली यहाँ उन्होंने रात में जो भी पढ़ा सुबह बोला होगा, भूल गए होंगे, या उनके जो भी एडवाइज़र है लिख के दिए होंगे, बोले होंगे। तो हमारे गलतियाँ हम दुरुस्त कर लेना चाहिए, चाहे मोदी जी हो, चाहे नड्डा जी हो, चाहे मैं। हम अपनी गलती को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक आपकी बातों में कोई वजन नहीं रहेगा। दूसरी चीज, प्रधानमंत्री ने ये भी कहा 1951 में जब चुनी सरकार नहीं थी, नेहरू जी ने अध्यादेश लाकर संविधान को बदला। सुने आप, ये उनके ही वर्ड है जो मेरे को प्रेस में मिला और कच्ची कॉपी जो मिली। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं क्यों लाया गया। प्रधानमंत्री जी शायद भूल गए कि संविधान का पहला संशोधन प्रोविजनल पार्लियामेंट ने किया था। प्रोविजनल पार्लियामेंट ने किया था, जिसके सदस्य संविधान सभा के ही सदस्य थे, इंक्लूडिंग हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो ये संशोधन इसलिए हुआ था ताकि पिछड़ी जातियों को आरक्षण दिया जाए और जमींदारी अबोलिशन हो सके। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि उस दौरान स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकम दुर्यराजन मामले में मद्रास स्टेट के रिजर्वेशन के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। तो आप बोल रहे ये रिजर्वेशन निकाल दे, SC ST का निकाल। अरे बाबा, उन्होंने गया, सुप्रीम कोर्ट ने इसको, इस रिजर्वेशन को खत्म करने की फैसला दी, तब ये जो अपना आर्टिकल 15(4) ये आ गया, 15(4) आ गया, उस वक्त आ गया। तो आप वो नेहरू जी के ऊपर ब्लेम रहा। नेहरू जी ने ऐसा, अरे ये तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का सजेशन था, वल्लभ भाई पटेल का सजेशन था। उन्होंने ये कहा, ये जो लैंड रिफॉर्म्स का है और उसके बाद 9th शेड्यूल इसको बाद में जोड़ा गया, और ये मंशा थी SC ST OBC और एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन के आरक्षण मिल सके। तो इसीलिए इस संशोधन का एक तीसरा पक्ष सांप्रदायिक दुष्प्रचार रोकना भी था। सरदार पटेल जी ने 3 जुलाई 1950 को इस बारे में पंडित नेहरू को विस्तार से पत्र लिखकर संविधान संशोधन की ही समस्या का हल बताया। और एक बार बोलो, नहीं, क्योंकि ये आवाज प्राइम मिनिस्टर तक जाना भी, तो इसलिए सरदार पटेल जी ने 3 जुलाई 1950 को इस बारे में पंडित नेहरू को विस्तार से पत्र लिखकर संविधान संशोधन को ही समस्या का हल बताया। अमेंडमेंट इज द ओनली रेमेडी, दिस इज सजेस्टेड बाय सरदार पटेल, एंड उनका भी अपमान कर रहे, उसको ऑथेंटिकेट करके रख लेंगे। हाँ, सरदार पटेल ने अपने पत्र में कहा था, सरदार पटेल ने अपने पत्र में कहा था, एज यू से वी हैव इन्वॉल्व्ड ourselves in so many legal and constitutional difficulties that we do not know how to overcome them. My own feeling is that very soon we shall have to sit down and consider constitutional amendment. ये किसने कहा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और उनको भी आप इंसल्ट कर रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम से सभी को इंसल्ट कर रहे हैं। वो जोश में आकर
नेहरू जी ने वो किया, अरे नेहरू जी क्या करना चाहते थे, वो पटेल भी था उसके साथ थे, अंबेडकर उनके साथ थे, और वो SC ST बैकवर्ड एजुकेशनल और एम्प्लॉयमेंट के लिए जो यहाँ पर उनको मार पड़ी थी, उसको ठीक करने के लिए अमेंडमेंट लाए, और वो पहला अमेंडमेंट था। अगर ये पहला अमेंडमेंट देश के लिए नहीं, शोषितों के लिए नहीं, तो आप कह सकते थे अपने लिए लाए। बताओ इसमें सब, और ये मेरे वर्ड नहीं है, इस अपने सरदार पटेल साहब के वर्ड है। सभापति जी, इसलिए मुख्यमंत्रियों को नेहरू जी ने पत्र लिखा था, जिसका जिक्र मोदी जी ने अपने भाषण में तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर नेहरू जी को बदनाम करने के लिए किया, जिसके लिए उनको देश से माफी मांगना चाहिए। ये मेरा डिमांड है। जो सत्य को अगर मोड़ तोड़ के रखते हैं देश के सामने और बदनाम करने की कोशिश करते हैं, इसीलिए उनको इस सदन में, उस सदन में माफी मांगना चाहिए और देश के जनता से माफी। और ये चीजें आप पढ़े तो मिलते हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशन इसमें डिबेट में मिलते हैं, लेकिन फिर भी आप गुमराह करते हो लोगों। इस संशोधन पर खुद बाबा साहब ने 2 घंटे सदन में इसे डिफेंड किया था। और एक बार पढ़ो, इस संशोधन पर खुद बाबा साहब ने 2 घंटे सदन में इसे डिफेंड किया था। मैं पूछना चाहता हूं कि मोदी जी को एतराज किस पर है? क्या SC ST पर, क्या OBC पर, क्या आरक्षण पर, और उनका किनके ऊपर एतराज है? अरे आरक्षण को सुरक्षित रखने के लिए, उनके राइट्स को दिलाने के लिए अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी अमेंडमेंट कराते हैं तो वो क्या दलितों के खिलाफ हो गए, SC के खिलाफ हो गए, ST के खिलाफ हो गए, आदिवासियों के खिलाफ हो गए? मैं पूछना क्यों ऐसी बातें करके लोगों को असत्य बातें बिठा रहे उनके दिमाग में? आप प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं, आपकी इज्जत करेंगे आपका कुछ, लेकिन ऐसी असत्य बातें जनता के बीच अगर लेके गए, इससे बहुत बड़ा देश को नुकसान होगा। सर, ये लैंड रिफॉर्म्स, आप बड़े किसान हैं, क्षमा चाहता हूँ, या छोटे किसान हैं मुझे मालूम नहीं सर, इसलिए एक मिनट नहीं हंसने की बात नहीं, मैं कृषक पुत्र हूँ। यानी आप कृषक नहीं हैं, ठीक है, ठीक है। तो मैं तो बस आगे चलिए। शुरू किया था मोदी जी के एतराज किस पर है? या वो गरीब किसानों को जमीन का मालिकाना हक मिलने पर उनके एतराज है? क्योंकि लैंड रिफॉर्म्स जो आना, उसके लिए भी गरीबों के तरफ से वो लड़ रहे थे, और सरदार पटेल से नाराजगी है। हम कहते हैं कि बीजेपी आरक्षण के विरोधी है और इसीलिए वे कास्ट सेंसस के खिलाफ है। सर, सभापति जी, देश के स्वाधीनता आंदोलन के बारे में मोदी जी को ज़्यादा पता नहीं है, इसीलिए क्योंकि वो इस विषय पे जाना नहीं चाहते, जो उन्होंने उस सफ़र में शामिल ही नहीं हुए थे, तो उसकी बात तो रह गई। अरे मैं खुद अपने को भी बोल लिया। आपके पिताजी थे अभी, तो 1946 के कैबिनेट मिशन प्लान के तहत कांग्रेस ने एग्जीक्यूटिव काउंसिल में नेहरू जी को वाइस प्रेसिडेंट बनाया था। इसीलिए उन्होंने 1947 में अंतरिम सरकार का नेतृत्व किया। देश का पहला आम चुनाव 51-52 में हुआ, जिसमें नेहरू जी प्रधानमंत्री बने। तब सरदार पटेल जी इस दुनिया में उस वक्त नहीं थे। इसके बाद
1964 तक लगातार नेहरू जी प्रधानमंत्री बने रहे। मोदी जी जैसों के लिए ही सरदार पटेल ने 14 नवंबर, सर इधर जरा ध्यान से, मोदी जी जैसे सरदार पटेल ने 14 नवंबर 1949 को नेहरू जी के जन्मदिन पर लिखे बधाई पत्र मैं पढ़ता हूं, आपकी इजाजत हो। कुछ स्वार्थ प्रेरित लोगों ने हमारे विषय में भ्रांतियां फैलाने की कोशिश की है और कुछ भोले व्यक्ति उन पर विश्वास भी कर लेते हैं। ये जो है ये खुद वल्लभ भाई पटेल जी ने लिखा है, लेकिन वास्तव में हम लोग आजीवन सहकारियों और बंधुओं की भांति साथ काम करते हैं। अवसर की मांग के अनुसार हमने परस्पर एक दूसरे के दृष्टिकोण को अनुसार अपने को बदलता है और एक दूसरे के मतभेदों का भी सम्मान किया है, जैसा कि गहरा विश्वास होने पर ही किया जाता है। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का उन्होंने लिखा हुआ पत्र है उनके जन्मदिन पर, लेकिन आज उनमें झगड़ा लगाने की कोशिश करते हैं। वल्लभ भाई पटेल नहीं चाहते थे, नेहरू जी वैसे थे। अरे वो उनके खुद के भाषण पढ़ो ना, उन्होंने क्या लिखा है लेटर वो पढ़ो, गांधी जी क्या बोले वो पढ़ो, लेकिन वो पढ़ना छोड़ के सब सुनी जो आरएसएस ट्रेनिंग में वो देते हैं वही बातें यहाँ पर बोलने से फायदा नहीं है। यहाँ संविधान की बात करो और जिनको आप टीका टिप्पणी करते हो उन नेहरू जी का पत्र देखिए, वल्लभ भाई जी का पत्र देखिए, महात्मा गांधी जी का पत्र देखिए। संविधान बनाने के लिए उन्होंने आखिरी में कैसा फैसला लिया, ये सब देखने के बाद अगर कुछ कहते तो मैं कहूँगा बहुत हमको ज्ञान दे रहे हैं, हम कोई छोटे मोटे स्कूलों में पढ़ के आए, बहुत बड़ा ज्ञान हमको यहाँ मिल रहा है, ऐसा सोचेंगे। लेकिन वो सब छोड़ के टीका कर रहे हैं और मैं आपके सामने पूरा सही डॉक्यूमेंट पेश कर रहा हूँ। सर, सभापति जी, रक्षा मंत्री जी ने लोकसभा में बोलते हुए कांग्रेस पर संविधान बनाने के श्रेय को लेकर कटाक्ष किया, किसका क्या श्रेय बनता है। बाबा साहब ने खुद कहा है, जिसमें मैं कोट करूंगा, द टास्क ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी would have been a very difficult one if this constituent assembly has been merely a motley crowd. There would have been nothing but chaos. This possibility of chaos was reduced to nil by the existence of Congress party inside the assembly, which brought into its proceedings a sense of order and discipline. ये बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा और लोगों ने सुना और ये नमूद हुआ है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के डिबेट में, और उन्होंने ये ओपनली कहा। अब वो भी टीका कर, बाबा साहब का सम्मान नहीं दे, बाबा साहब, अरे तुम तो बिगिनिंग से ही उनका सम्मान नहीं कर रहे। ये तो उन्होंने खुद कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में उन्होंने कहा, अरे तुम तो उनके खिलाफ थे। सर, मैं बीच में मेरे को याद आया, बोल सकता हूँ सर, जब संविधान में तिरंगा झंडा और नहीं ये जब यहाँ पर स्वीकृत हो गई, जब तिरंगा और कॉन्स्टिट्यूशन ये सब, तो मुंबई के रेलवे स्टेशन पर बीजेपी वालों ने और ये अपना हिंदू महासभा वालों
और आरएसएस वालों ने जाकर उन्होंने सैफरीन झंडा दिखाया। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, बाबा साहब, अरे जनसंघ भाई, अरे तुम्हारा पहला अवतार, जैसा हमारे धर्म में 10 अवतार होते हैं, तुम्हारा वो दूसरा अवतार और पहला अवतार, तो छोड़ दीजिए उसको। सर उनको झंडा दिए। तब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, क्या मैं ये सैफरीन झंडे के लिए, इसको देखने के लिए मैं आया हूँ? मेरा झंडा अलग है, तिरंगा झंडा, और ये देश का झंडा ही रहेगा, ये काम नहीं चलेगा, प्लीज हटो बोल के उनको हटकर आगे चले। और ये बॉम्बे रेलवे स्टेशन पे घटना घटी, और आज ये बोलते हैं कि अंबेडकर नेहरू जी के खिलाफ थे और संविधान बनाते वक्त उनको सम्मान नहीं। ये तो खुद बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि ये जो मुझे सम्मान मिला और इतना कांग्रेस के वजह से मैं ये घटना बना सका, और वो भी स्मूथली बना, कोई भी इसको उस वक्त डिस्टर्ब नहीं किया। सर मैं आपसे और एक विनती करूंगा, आगे चलकर उन्होंने ये भी कहा, द कांग्रेस पार्टी इज देयरफॉर entitled to all the credit for the smooth sailing of the draft constitution in the assembly। ये उनका, अगर वो दुखी होते सर ये बोलते थे, और कहीं की बात तो कहीं। अब अपोजिशन पार्टी में जब बाबा साहब अम्बेडकर थे, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के वो प्रेसिडेंट थे, और जो मंडल हमारे बंगाल के वो जोगेंद्रनाथ, बैरिस्टर जोगेंद्रनाथ मंडल, वो सेक्रेटरी थे। तो नेचुरली उनकी पार्टी अलग थी। तो उसमें जब उनको वहां से हार हो गई, तब यहाँ पर जोगेंद्रनाथ मंडल ने सेक्रेटरी वेस्ट बंगाल में रिसिग्नेशन दी। राजीनामा देने के बाद उनके सीट पर बाबा साहब अम्बेडकर चुन के आए। तुम्हारी मेहरबानी से नहीं है, तुम लोग वैसा बड़ा बड़ा के ले रहे ना, तुमसे नहीं है। अरे तुम तो उनके खिलाफ थे, और आपके जो जनसंघ के नेता थे उन्होंने भी वहीं से चुन के आए थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। क्योंकि वो जल्दी याद नहीं आता श्यामा प्रसाद मुखर्जी का, क्योंकि कभी ज्यादा नाम लिया नहीं, उनको याद है। लेंगे भाई, लेते वक्त, अब ले रहा हूं ना। सर चेयरमैन साहब, इस सदन के माध्यम से ये देश को बताना चाहता हूं, संविधान सभा में कांग्रेस को प्रचंड बहुमत था। बाबा साहब अम्बेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन चुना गया। खुद बाबा साहब ने अपने 25 नवंबर 1949 के भाषण में कहा था, मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। साहब आप उधर देख रहे हैं, इसलिए मेरी बात आप 99% आप ही देख रहा हूं, लेकिन 1% ही बहुत इंपॉर्टेंट। 100 बनाने के लिए 1%। 99 तेंदुलकर ने 10 बार मारा, 99 और 12, लेकिन 99 मारा, लेकिन सेंचुरी नहीं हो सका। तो इसीलिए मैं आपसे विनती कर, ये बहुत मुद्दा है। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ था जब ड्राफ्टिंग कमेटी मुझे अपना अध्यक्ष चुना। समिति में मुझसे बड़े, मुझसे बेहतर, मुझसे सक्षम कहीं लोग थे। सबको पता है कि जब आज़ादी मिली तो देश में सुई भी नहीं बनती थी, खाने पर कोई अनाज नहीं था। केवल 35 साल की औसत उम्र थी, लेकिन पिछले 60-70 सालों में देश ने बहुत तरक्की की। और आप बोलते 55 साल में आपने क्या किया, 70 साल में क्या? अरे बाबा, हम अगर नहीं करते
तुम लोग इंजीनियर हो के यहाँ नहीं बैठते, डॉक्टर हो के नहीं बैठते थे, और मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री भी नहीं बनते थे, और मैं एक लेबर का बेटा अपोजिशन लीडर भी नहीं बनता था। ये सोच के रखिए आप, तुम अपने आप को 30 बार का मत समझिए। ये सब देन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, महात्मा गांधी की, डॉक्टर अंबेडकर की, वल्लभ भाई पटेल की है, तुम्हारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। नेहरू जी आधुनिक भारत की नींव रखी। सर, हाँ, तुम हमारे पार्टी में आए तो देखेंगे। सर, नेहरू जी ने आधुनिक भारत की नींव रखी, शास्त्री जी ने हरित क्रांति की बुनियाद रखी, इंदिरा जी ने देश को परमाणु शक्ति से संपन्न बनाया, सामाजिक न्याय के लिए 20 सूत्री कार्यक्रम दिया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, राजीव जी ने संचार क्रांति लाई और पंचायती राज और लोकल बॉडीज का आधार बनाया, जिसको नरसिंह राव ने 73rd 74th संविधान अमेंडमेंट इनको बोला। आपको बधाई दे रहे हैं। अरे वो कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे, मेरी पहचान हैदराबाद से थी उनकी। नहीं, आपको बधाई दे रहे हैं। अरे मैं ये कह रहा हूँ 73 74 अमेंडमेंट जो राजीव गांधी जी की सपना थी और जो उन्होंने तैयार किया था उसको आगे लाया गया, और आज जो महिलाओं को रिजर्वेशन मिल रहा है, जो मेयर का हो, जो पंचायत का हो, जो जिला पंचायत अध्यक्ष हो, ये सब जो मिल रहा है मैडम, ये कांग्रेस की वजह से मिल रहा है। ये कांग्रेस ने एक्ट लाया। महिलाओं को क्या करे, महिलाओं को क्या करे, ये करे, उनको अध्यक्ष बनाए, मेयर बनाए, पंचायत मेंबर्स बनाए, तालुका पंचायत मेंबर्स बने, ये बनाए। अगर हमारी सत्ता आएगी तो हम तुमसे भी तेजी से महिलाओं का आरक्षण बिल इम्प्लीमेंट करेंगे। अरे हर चीज एक ही दिन में नहीं होता, तुम लोग अपोज करें उस वक्त, चलो। और मनमोहन सिंह से हर एक सुधारों का काम किया। प्रधानमंत्री की आधारहीन बातों से इतिहास बदल नहीं सकता। जो सत्य है वो सत्य है, जो असत्य है वो असत्य है। इसीलिए कम से कम वो अपना ध्यान इधर रखिए। हम फर्जी आंकड़ों की नीति नहीं करते। अगर कांग्रेस की सरकार को असली उपलब्धियां बताने लगूंगा तो आपके पास समय नहीं है, और मुझे भी ज़्यादा कुछ बोलना है, लेकिन थोड़ा तो मुझे बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि हमको उधर से इतने लोग बात करके ठुकते रहे, असत्य बातों को उन्होंने सही बोल के बताने को सारे दुनिया कोशिश की, लेकिन हम उससे डरने वाले नहीं हैं। उत्तर को प्रत्युत्तर देंगे और सत्यता पे आधारित उत्तर देंगे। सर, संविधान के अनुच्छेद 15 के तहत धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव रोका है, लेकिन आज क्या कुछ घट रहा है ये सबको पता है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने चैलेंज समझा था, इसलिए कि 42nd अमेंडमेंट लेकर आई, जिसके तहत सोशलिज्म और सेक्युलरिज्म को प्रियम्बल में जोड़ लगाया और आर्टिकल 51A यानी तुम्हारी फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है वो बताए। तो वो गलत है। फंडामेंटल ड्यूटीज
क्या है, अगर आप देख लेंगे तो आपको मालूम होता है। और मैं ये बताना नहीं चाहता हूं क्योंकि आप वो बात को छुपाना चाहते हैं, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। तो इसीलिए ये कर्तव्य, हाँ, जो मोदी साहब ने नाम रखा है कर्तव्य पथ, हाँ, लेकिन कर्तव्य को ही भूल गए। 51A का जो आर्टिकल है उसी को भूल गए हो। वो सेक्युलर, सोशलिज्म, ये सब फालतू के वर्ड है, निकाल लो। ये कर्तव्य पथ में गड़बड़ी हो रही। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कम से कम जब कभी वो आपके पास आएंगे, ज़्यादा तो इधर नहीं आते, कहीं मिले तो भी आप कह सकते हैं जरा संविधान के तहत चलो। लोग राज्यसभा में बोल रहे हैं, मुझे बड़ा दिक्कत होता है इसका उत्तर देना, इसीलिए आप ये कीजिए सर। और एक बात मैं बोलूँ, सुप्रीम कोर्ट ने सोशलिज्म और सेक्युलरिज्म को संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा माना और जजमेंट आफ्टर जजमेंट ने इसे सही ठहरा दिया। तो रिसेंटली उसको तो मानते ना, हम बोले ठीक है, चीफ जस्टिस बोल रहे हैं, जज ये सही है कह रहे सो, लेकिन दुनिया सही कह सकती है, लेकिन मोदी साहब कभी इसको मानेंगे नहीं। वो अपनी ही बात करेंगे, वो जो बोलते हैं वही सही। तो इसलिए आज आप भले ही राजनीति करने के लिए प्रधानमंत्री कोसने का मौका नहीं छोड़ते, खास करके जो शहीद इस देश के लिए हो उनका नाम लेकर बात करते हैं। और इमरजेंसी की बात तो बहुत बार हो गई। अब जब से इलेक्शन से पहले भी इमरजेंसी की बात, इलेक्शन आने के बाद भी हुई, फिर उसके बाद में एक इलेक्शन में भी, दूसरे इलेक्शन में भी, तीसरे इलेक्शन में भी हुई, सदन में भी हुई, यही बात करते रहते हो। लेकिन उसका तो उन्होंने उत्तर दिया, जो गलती हो गई गलती हुई है, लेकिन इसके लिए हमको सुधारना है। तो इन्होंने कितना टीका किया, उन्होंने सहन किया, आपने उसको सदन से बाहर निकाला। और इंदिरा गांधी जी 1980 में थम्पिंग मेजॉरिटी से चुन किया, थम्पिंग मेजॉरिटी से, सिर्फ 2 साल में। कहाँ गया तुम्हारा ये जो टीका टिप्पणी को उत्तर? लोगों नहीं देते ना, चुनाव करके ही होता। तो ये चुनाव आया और जनता का निर्णय हुआ, ये अदालत में तो आपने निकाल दिया, ठीक है, उन्होंने भी मांग गए, लेकिन उसके 2 साल बाद उन्होंने थम्पिंग मेजॉरिटी से आके फिर तो ये अरे भाई, सो इसीलिए उन्होंने गलत बताया और उनको सत्ता से बाहर भी रहना पड़ा। लेकिन आज उनको सभी लोग याद करते हैं और इंदिरा जी को सभी लोग मानते हैं। ये लोग, बहुत से लोग वोटिंग को गए होंगे, अब हमारे लोग भी उधर गए हैं, बाहर के भी गए हैं। ये संगम है सर, सामने वाले रोड पर बैठे, हाँ, संगम। ये सामने वाले बैठे तो ठीक है, वो पहले, लेकिन सेकंड, थर्ड, फोर्थ पे जो बैठे हैं ना, वो सब या इधर से उधर गए, उधर से इधर आ गए, या हर पार्टी से वहाँ गया, क्योंकि ईडी मशीन, सीबीआई। जयराम जी कह रहे हैं कुछ, हाँ, जयराम जी कुछ कह रहे हैं आपको। हाँ, तो हर लोग यहाँ, वो एक वॉशिंग मशीन बड़ी खरीदी है, कौन? हमारे शाह साहब, इतना बड़ी वॉशिंग मशीन करे, आदमी अंदर जा सकता है और क्लीन होके बाहर आता है, अंदर जाके क्लीन होके बाहर आता है। और वो जाके इतना जोर से चिल्लाता है, अरे यहाँ खाया पिया रहा, राज किया,
कोई सब कुछ बना, वही यहाँ पर हमको बुद्धि पढ़ाते हैं और उल्टा बयान देते हैं। तो ऐसे लोग इस देश में हैं, ऐसे लोग सर, हम संवैधानिक प्रावधान के तहत कांग्रेस पार्टी ने देश में कास्ट सेंसस की मांग की है और कास्ट सेंसस की मांग इसलिए कर रहे हैं, कमज़ोर लोग तबकों के लोगों को बेहतरीन के लिए, उनके बेहतर के लिए एक रणनीति बनाई जाए। इसीलिए आप ये जो हमारा डिमांड है ये किसी को खुश करने के लिए नहीं। और ऐसा होता है पॉलिटिक्स में, आज मेरे साथ वोट देते हैं, कल दूसरों को देते हैं। हम देखे हैं 60 साल में कैसा हुआ, क्या हुआ, लोग बदलते कैसे रहते हैं। तो इसीलिए वोटरों के ऊपर आप गुस्सा मत निकालो, एरिया के ऊपर आप गुस्सा मत निकालो। कोई एरिया, कोई स्टेट अगर आपको वोट नहीं देता तो आप क्या करते थे, उस स्टेट को पैसे देने का बंद करते हो, जीएसटी वक्त पे नहीं देते हो, ये आपका काम चल रहा है। और इरिगेशन पे नहीं देते हो, रेलवे के प्रोजेक्ट को नहीं देते हो। तो इसीलिए मैं और 1-2 मिनट लूँगा, खत्म। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने आने वाली चुनौतियों से आगाह करते हुए संविधान सभा में कहा था, इन पॉलिटिक्स वी विल हैव इक्वालिटी एंड इन सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ वी विल हैव इनइक्वालिटी। हाउ लॉन्ग शैल वी कंटिन्यू टू डिने इक्वालिटी in our social and economic life? If we continue to deny it for long, we will do so only by putting our political democracy in peril. तो अध्यक्ष, सर, और गरीब बनते जा रहा है, अमीर बनते जा रहा है और 5% इस देश के लोग 62% संपत्ति उनके पास है। 1% लोगों के पास आज 3% संपत्ति है, सॉरी 50% लोगों के पास। तो ये सारी चीजें, आपकी इकोनॉमी किधर गई? क्यों इसको कम करने में आप लोग काम नहीं कर रहे? ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं। और आप इतने सभी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन के तहत करते हो तो ये क्यों नहीं किए, ये मेरा सवाल है। दूसरा और एक सवाल है सर, मणिपुर में लगातार हिंसा और अशांति जारी है। हिंसा और अशांति जारी है, लेकिन 1.5 साल में मोदी जी को मणिपुर की हालात का जायजा लेने का समय नहीं मिला। वो पूरे दुनिया में फिर रहे हैं, देश में फिर रहे हैं, इलेक्शन के लिए हर जगह जाते हैं। परसों मैं जब मिले थे तो उस वक्त मैं बोला, मुझे बोले कि कैसे हो, तो ठीक है बोले, शायद नड्डा साहब भी थे वहाँ, तो ठीक है बोले, तो आप बहुत घूम रहे बोल के मुझे बोले। तो मैं बोला साहब, अब इलेक्शन में घूमना ही पड़ता है, आप जब गली गली घूम रहे हो, मैं कम से कम दिल्ली में तो फिरना पड़ेगा। तो ये सब जगह जाने का मौका उनको मिलता है, लेकिन मणिपुर जाने के लिए वो तैयार नहीं है। राहुल गांधी खुद गए और वहां से पाद यात्रा निकाली और ऑल पार्टी वाले उसको सपोर्ट करें। जब वो निकलते हैं, आपको तो इतना संरक्षण है, आप क्यों नहीं जा रहे, क्यों इस समस्या को सुलझा रहे हैं? तो मैं आपसे ये बात करने
इसके लिए मैं बात कर रहा था। और ये अशांति कितने दिन चलेगी, कैसा चलेगा, तो ये आप मुझे बताना चाहिए। और इस देश को एक हमने रखा। वल्लभ भाई पटेल जी ने 500 से अधिक रियासतों में बटे देश को एक किया, लेकिन आप क्या कहते हैं, एक है सेफ है। अरे एक है सेफ है, ये सेफ है देश। इसमें कोई अगर अंगार, इसमें अगर कोई अंगार डालेंगे तो वो लोग इसको फोड़ने का काम कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं ज़्यादा आपका वक्त नहीं लेता। तो देखिए, और एक लास्ट कोट में आपका पढ़ूंगा। भक्ति इन रिलीजन may be a road to salvation of the soul, but in politics, bhakti or hero worship is a sure road to degradation and to eventual dictatorship. तो ये डिक्टेटरशिप के बाहर है। आप जो आज बजा रहे हैं ना ढोल बजा बजा के उनकी भक्ति की नारा कर रहे हैं, तो वो ये लोग उनको डिक्टेटरशिप की तरह ले जाना चाहते हैं और वो डिक्टेटर बनने को तैयार है। तो इसीलिए मैं आपसे विनती करूंगा कि ये डेमोक्रेसी डिक्टेटरशिप के तहत नहीं चलना चाहिए और सभी लोग आज जो संविधान को हम मानते हैं वो उसी पर हम चलना चाहिए। और आज इस देश के लिए एक बात ज़रूरी है, जब देश को आज़ादी मिली, जब एटली ने, आपको मालूम, लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री, उन्होंने उस वक्त चर्चिल ने क्या कहा था, भारत को स्वाधीनता देने वाले लॉर्ड एटली सरकार के प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान ब्रिटिश संसद में पूर्व प्रधानमंत्री और तत्कालीन विपक्षी नेता विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि आज़ाद होते ही भारत बिखर जाएगा और वह दुष्टों, बदमाशों, लुटेरों के हाथ चला जाएगा। ये बात चर्चिल की ये मंशा थी। हम नहीं चला सकते, हम संविधान नहीं बना सकते, इसीलिए उन्होंने ये बात की। लेकिन पंडित नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद, डॉक्टर अंबेडकर ने इस देश को डेमोक्रेसी लाकर सबको बचा दिया। और इतना कहते हुए मैं और कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। आपको एक ही मिनट में समझा के बैठूंगा, एक ही मिनट में सब। देखो, एक राहत इंदौरी का है, राहत इंदौरी, जहाँ से गुजरो धुआं बिछा दो, जहाँ से गुजरो धुआं बिछा दो, जहाँ भी पहुँचो धमाल कर दो, जहाँ भी पहुँचो धमाल कर दो। तुम्हें सियासत ने हक दिया है, हरी जमीनों को लाल कर दो, हरी जमीन को लाल कर दो। अपील भी तुम, दलील भी तुम, गवाह भी तुम, वकील भी तुम, जिसे भी चाहो हराम दिल लिख दो, जिसे भी चाहे वो हलाल कर दो। ये शब्दों के साथ मैं मेरे 4 शब्दों को समाप्त करता हूँ। आपने जो मेरे को समय दिया इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ। मेरा समय मेरे पार्टी के समय में मत काटो, यही विनती करता हूँ। मान्यवर, आपने एक न्यायालय के आदेश की चर्चा की थी झंडे संबंधित, उसकी प्रतिलिपि सदन के पटल पर रखती। देखिए क्या परफेक्ट टाइमिंग है। निर्मला जी ने 79 मिनट्स लिए, आपने भी 79 मिनट्स लिए। परफेक्ट है। श्री साकेत गोखले। Thank you so much, sir. Sir, on Saturday, Prime Minister Modi presented 11 resolutions. I call them 11 jumlas during his speech on the Constitution in the Lok Sabha.
But the problem is that PM Modi needs to be reminded of the basics. So today and tomorrow, my party, All India Trinamool Congress, will remind PM Modi of the 9 key terms in the preamble of the Constitution of India, which his government has completely destroyed. These are: we the people of India, sovereign, socialist, secular, democratic, republic, justice, liberty and equality. Sir, I will speak today on justice for just 3 minutes, because injustice has been the hallmark of the Modi government. Sir, I want to ask, how will PM Modi defend his record on justice to the following people? The 21 lakh Manrega workers of Bengal who have worked but haven't been paid since 3 years because Modi's government has withheld Bengal's dues. Why? Because his party lost the election. Bilkis Bano, whose rapists were forgiven and released by this government. Umar Khalid, Khalid Saifi, and numerous others who have spent years in jail only because they dared to criticize Modi and Shah. Yes, yes. The 750 farmers who died outside the borders of Delhi only for protesting for their rights. Laws which were later taken back by the Prime Minister. The people of Manipur who today, as we speak, as I speak here, sir, are seeing their homes burn and their families die every day. Sir, I've had the personal privilege of experiencing justice under this government. I was locked up in a jail in Gujarat for 155 days in a case related to a tweet and a 500 rupee money laundering case. But then I found out what real justice means when my leader Mamata Banerjee sent me to this august House of Parliament where my oppressors have to see my face every day. So Mamata Banerjee understands justice and is committed to it. Social justice, as the preamble says, Mamata Banerjee brought schemes like Lokhir Bhandar and Kanya Shri. That Lokhir Bhandar was brought a long time ago. Ab ye copy kar rahe hain, Ladki Behna, Ladki Behin. It was started by Mamata Banerjee. So social justice through measures like Aparajita Bill to give justice to women who face violence, but that has not yet been passed. I don't know why the finance minister was so embarrassed even after prompting when she said women's reservation bill, Hamari Sarkar ne 98 mein. Why didn't she mention that it was Honorable Mamata Banerjee who had brought the bill in 1998? Sir, our constitution guarantees social, economic and political justice to the people. Where is social justice when minorities are subjected to atrocities every day? And when the Prime Minister ran a poisonous communal campaign during the Lok Sabha elections? Where is economic justice when our youth have no jobs and families have no money left thanks to rising prices and inflation? The Honorable Finance Minister can at least do the least and reduce taxes on the middle class, sir. Where is political justice when opposition leaders are threatened using CBI and ED, and when the corrupt ones who go through the BJP washing machine become squeaky clean? So the PM loves to talk about previous governments and their record of 70 saal. I have to admit that our Prime Minister has been very successful on one front. Sir, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, the way he's destroyed the constitution in 10 years, previous governments couldn't do for 70 years. So Modi does not care about justice, but the people of India do. Which is why it was poetic justice when his party BJP was recently reduced to 240 seats in the Lok Sabha. People destroyed his arrogance and his party. And I want to from here, sir, with my hand on the Constitution, promise the Prime Minister that he will again be reminded of the meaning of justice, which is in our preamble, when his party BJP, which has deprived and defamed the people of Bengal, will be routed again in 2026 under CM Mamata Banerjee. Thank you, sir. Thank you. Honorable Tiruchi Sivaji. Thank you, Mr. Deputy Chairman, sir. Sir, I am indeed privileged to participate in this discussion on the glorious journey of 75 years of our Constitution on behalf of the DMK party. Sir, our Constitution is a unique and enduring document which has withstood many crises and the test of time. Sir, the Indian Constitution has not come out of a revolution, as in many other countries, but it is out of a series of experiences, developments rooted in constitutional methodologies and principles. Sir, I have got a lot to say about it, sir. Before that, I would like to recall Thomas Jefferson,
the architect of the Declaration of Independence and the third President of United States of America, he once wrote that no constitution in the world will survive for more than 19 years. Later, the same theory was reaffirmed by 3 researchers on an empirical study which has come out in The Endurance of National Constitutions. And it also said that every constitution expires within 17 years. They said some reasons for that, sir. That inclusivity is a main reason, and adaptability of the constitutionalism. Sir, as far as we are concerned, we want to appreciate first the framers of the Constitution. Sir, as the statement of Thomas Jefferson, or as which has been reaffirmed by researchers, sir, our Constitution has survived for more than 17 years and still it is robust and dynamic. What are the reasons for that, sir? The other constitutions have not debated as much as us. The American Constitution was debated and drafted within 4 months, and the South African was within 9 months. Whereas the Constituent Assembly of India, to draft the Constitution, sir, first the members were elected indirectly across the state, from the provincial states, from the princely states, and the provincial principal commissioners. It came to about 389, and later after the partition it came down to 299, and with that the Constituent Assembly started functioning. These are all very important facts, sir. We have to mention what is the reason for the robust nature of our Constitution. Sir, it held 11 sessions, sir, which ran up to 165 days, out of which 114 days were focused totally on the draft Constitution. 7,635 amendments were tabled, and 2,473 amendments were moved. Whereas in other constitutions, in other nations' constitutions, amendments were not moved, sir. And subsequent to that, the position of our Constitution is very much glorified. Our Constitution is credited for establishing the rule of law and also fostering a responsible government to India. Our Constitution played a pivotal role in shaping India's democratic character and safeguarding individuals' liberties, balancing the delicate relationship between the sovereign state and federalism, and above all, it formed the backbone of India's governance. Sir, before I go into the subject, I have something to say which the Finance Minister, in her initiative speech, said about the first amendment to the Constitution, which you are very well aware of, 1951. She said about 1904 of the Constitution, the amendment that was made was 1904. I would like to say, sir, in the same amendment, there was another one, which is 15.4, Article 15, 5 and 6. Sir, the first amendment to the Constitution was subsequent to a case which the leader of opposition mentioned, Shanmugam Doreraj. Before that, one should know about the history, sir. It was first in Tamil Nadu, then Madras Presidency. In 1921, when the Justice Party, our parent body, was ruling Tamil Nadu, a communal GO was issued. By that way, everyone were benefited by way of reservation. So long, since then, only the upper caste was enjoying all the education and employment opportunities. And that was made with more reservation in 1927. And later, sir, this Shanmugam Doreraj filed a case in the court that this communal reservation deprives her of a genuine seat in medical. The court, without applying. Later came the fact. The court upheld her case and petition and struck down the communal reservation. The strange part of this is the
Shanmugam Raj, who has filed the case, was not at all an applicant. So it was struck down, and all those days which were enjoyed by the people of OBC, SC, and other communities, this reservation benefit was really shocked. So at that time, Thanai Periyar, our mentor and our founder leader Anna, launched a very big agitation in Tamil Nadu demanding for reservation, and it became a people's movement. And because of that, the 1951 amendment was brought. The first amendment, it says that nothing in this article or subclass, nothing in this article or in class 2 of the Article 29 shall prevent the state from making any special provision for the advancement of any socially and educationally backward classes of citizens or for the scheduled castes and the scheduled tribes. So, sir, this 1951 First Amendment, no one should forget, sir, that without this, the benefit would not have been extended to the suppressed and oppressed classes all those years. It was thanks to the Dravidian movement. What we call now Dravidian model is only this. Only because of that, the reservation was restored. And later, when the Mandal Commission recommendations came for reservation to the OBC in education and employment, I would try to recall who all opposed and who pulled down the government of Mr. V.P. Singh, the then Prime Minister. But then it was implemented. May I urge the learned people, members in the treasury benches, it was only by an OM, that is Office Memorandum. If you are really interested in the interests of OBC, you bring a constitutional, as you did for EWS. You did for EWS, but you are not yet still bothered about the OBC, but you say very proudly everywhere that you are all OBC communities. So, sir, and this is the right time. Dr. Ambedkar, who became later the chairman of the drafting committee, was only a member in a subcommittee on fundamental rights. Before 9 months, he was assigned the responsibility of chairing the drafting committee, sir. In the subcommittee, on 27th of February 1947, asked its members to submit their ideas in writing. And Dr. Ambedkar, along with Mr. Munshi, Aladi Krishnasamy Iyer, and Harnam Singh, he also submitted one. Very interesting to know, sir, the title of that draft report which Ambedkar submitted was United States of India. His language was reminiscent of America's Declaration of Independence. It very clearly said, sir, that the federalism must be upheld and more rights to be given to the states. But on the day of adoption, Munshi's draft was adopted by the committee, and Ambedkar was not also there. It was not present. Later, he tried his best to implement what all was in his mind in the United States of India. So ultimately, Dr. Baba Saheb Ambedkar's intention was to strengthen the states. There is no explicit term federalism in our constitution, but the very first in the preamble says, India, that's Bharat, shall be a union of states. That itself is very emphatic. And later, he became the chairman of the drafting committee, and it's very appreciable, sir, the constitution which was drafted and adopted later, it established the foundation for a country that would respect diversity in religion and culture while upholding the values of equality and fairness. These are to be kept by the ruling party today. The nation's dedication to diversity and tolerance is demonstrated by the Indian Constitution, which protects the rights of linguistic and religious minorities. Additionally, the Constitution preserved unity among many religious communities by guaranteeing that the state would not favor any one religion. Sir, underscore,
The Constitution guarantees that the state would not favor any one religion over another by supporting the secularism ideal. It's very clear, sir. But what is happening today? I don't want to bring down the level of the debate, because it's a Constitution's glorious celebration we are, 75 years. So we have to applaud. So many scholars, intellects were in the Constituent Assembly, whom we fondly remember, or it is our bounden duty to pay respects to all those people. They are now called as the framers of the Constitution. Dr. Ambedkar, Mr. Jawaharlal Nehru, Sardar Vallabhbhai Patel, Maulana Abul Kalam Azad, Rajendra Prasad K.M. Munshi, Aladi Krishnaswamy Iyer, B.N. Rao, Shyama Prasad Mukherjee, J.B. Kripalani, Rafi Ahmad Kidwai, Mr. Santanam, K.T. Shah, H.V. Kamath, T.T. Krishnamachari, and above all, Qaid-e Millat Sahib. Sir, when the partition happened, when Jinnah wanted to have a separate nation for Muslims, and as I said, 389 members in the Constitution Assembly came down to 299. Many, when he declared that whoever are Muslims, come with me to the Muslim nation. But including Qaid-e Millat Sahib, the Muslims who are now in this country said, yes, we are Islamic people, but India is our country. But how they are treated now? I would urge, sir, again the government, not an iota of apprehension should come in the minds of the linguistic and religious minority in this country. But it often happens. We have to see to that, sir. Everything. And Dr. Ambedkar very responsibly told that. He was, of course, lauded by everyone. Pattabhiram Sitaramaiah told that, when speaking about Dr. Ambedkar, he said, what a steamroller intellect he has brought into this Constituent Assembly, which is irresistible, indelible, and unconquerable. And Dr. Rajendra Prasad, the chairman of the Constituent Assembly, very clearly said that if at all the best thing the Constituent Assembly has done is that we have made Dr. Ambedkar as the chairman of the drafting committee. And what he said, sir, Dr. Ambedkar, he was also very much responsive. He appreciated each and everyone. The leader of opposition quoted someone. And Dr. Ambedkar very clearly says, I quote, sir, Sir Aladi Krishnamaiah, Dr. Ambedkar said, I came with no greater aspiration than to safeguard the rights of the interests of the scheduled caste people. I had the least remotest idea that I would be entrusted with such a big responsibility. There are people bigger, better, and more competitive than me in this assembly. But they have made me. They have entrusted the responsibility. They have chosen me as the chairman of the drafting committee. And he continues to say, sir, and he says very much about S.N. Mukherjee, Sundarnath Mukherjee. The West Bengal people should be happy about it. The Surendranath Mukherjee, he said, the task of the drafting committee would have been a very difficult one if this Constituent Assembly has been merely a motley crowd, a tessellated pavement without cement, a black stone here and white stone there, with each member or each group was a law unto itself. In that respect only, he is appreciating the Congress. It is because of the discipline of the Congress party that the drafting committee was able to pilot the Constitution in the Assembly with the sure knowledge as to fate of each article and each amendment. My job is not to be a spokesperson, sir, but I call a spade a spade. We have got many things, but we call a spade a spade. And Dr. Ambedkar shared the credit with each and everyone. He said party discipline, in all its rigidity, would have converted this assembly